निमंत्रण और चिंतन के लिए हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ। आई रिक्वेस्ट आवर ऑल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट टू काइंडली लाइट द लैंप। इस संकल्प के साथ कि अज्ञानता, अशिक्षा, असुरक्षा का तम हरेगा, नई आशा, नई उम्मीद, नई शक्ति का संचार होगा। इस संकल्प के साथ कि जो पल बीता सो बीत गया, अब आगे कदम बढ़ाना है, मन में धरकर श्री कृष्ण छवि अब नव इतिहास बनाना है। और नव इतिहास तभी बनेगा जब नई सोच होगा, सकारात्मक होगा। इस सोच के संकल्प को सिद्धि और शक्ति मिले, यही हम सभी की कामना। हम सभी के बीच मंच पर मौजूद डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, माननीय रेखा शर्मा जी, माननीय बालाजी श्रीवास्तव जी, मिस सैयद शहजादी जी, हिबू तमांग जी, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और सबसे पहले सम्मान की बेला मैं बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करूंगी रेखा शर्मा जी से, ऑनरेबल चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, टू गिव अ वार्म वेलकम टू आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, MOS एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन। किसी परिचय का मोहताज नहीं ये नाम। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। पिछले 4 दशकों तक मणिपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवाएं दी और उसके बाद अब बतौर विदेश राज्य मंत्री भारत के हितों को विदेशों में प्रभावी तरीके से रख रहे हैं। बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। नाउ आई रिक्वेस्ट मेंबर सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मीता राजीव लोचन जी से कि वो माननीय रेखा शर्मा जी का, ऑनरेबल चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का स्वागत करें। रेखा शर्मा जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। आदरपूर्वक अनुरोध मेंबर सेक्रेटरी मीता राजीव लोचन जी से कि वो मिस सैयद शहजादी, ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का स्वागत करें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार आपका। गुजारिश जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन श्री ए अशोली चलाई जी से टू गिव अ वार्म वेलकम टू डायरेक्टर जनरल BPR&D श्री बालाजी श्रीवास्तव जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत आभार। जॉइंट सेक्रेटरी श्री ए अशोली चलाई जी से एक बार फिर से निवेदन कि वो स्वागत करें मेंबर सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माननीय मीता राजीव लोचन जी का। बहुत बहुत आभार। और सम्मान की बेला में मैं अनुरोध करूंगी डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन प्रदीप कुमार जी से कि वो जॉइंट कमिश्नर फॉर पुलिस हिबू तमांग जी का स्वागत करें। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष पुलिस इकाई के जॉइंट कमिश्नर हिबू तमांग जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत और आभार आपका। अनुरोध डिप्टी सेक्रेटरी प्रदीप कुमार जी से, आप स्वागत कीजिए जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ए अशोली चलाई जी का। अनुरोध डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन प्रदीप कुमार जी से, आप जॉइंट सेक्रेटरी ए अशोली चलाई जी का स्वागत करें। आज एक गंभीर और अहम विषय पर सुनने और समझने का मौका मिलेगा। तमाम माननीय इस समय हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत आभार आपका। निवेदन करूंगी श्री ए अशोली चलाई जी से, जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आप आएं और स्वागत भाषण संबोधित करें। Very good morning to all. Sri Rajkumar Ranjan Singh, Honorable MOS, Ministry of External Affairs and Education, Srimati Rekha Sharma, respected Chairperson, National Commission for Women, Ms. Said Shahjadi B, officiating Chairperson,
National Commission for Minorities, Srimati Mita Rajiv Lochanji, Member Secretary NCW, Sri Balaji Srivastavaji, Director General BPRND, Sri Hibu Tamangji, Joint Commissioner of Police, Spooner, Delhi Police, esteemed resource persons, distinguished guests, officials from various ministries, police personnel, ladies and gentlemen, girls and boys. I, on my own behalf and on behalf of National Commission for Women, extend a very warm welcome to all of you. We are conducting this important seminar on racial diversity sensitization in collaboration with National Commission for Minorities, Spooner, Delhi Police, and BPRND. I would like to express my sincere gratitude to Sri Rajkumar Rajan Singh Ji, Honorable MOS, External Affairs and Education, who took time out from his busy schedule and graced this important occasion. Honorable Minister has been a source of encouragement to all of us always. I also take this opportunity to express my sincere gratitude to Madam Rekha Sarmaji, Chairperson NCW, for guiding us throughout for organizing such an event at national level. The National Commission for Women, a statutory body set up in 1992 under the National Commission Act 1990, has a wide mandate covering women's development. The Commission has played a pivotal role in investigating and examining and reviewing the legal safeguards for protection of women under the Constitution and other laws. Since its inception, in its effort to fulfill its mandate, the National Commission for Women conducts research studies, organizes seminars, consultation on women-related issues, inspects jails, advises on policy matters on women, organizes nationwide legal awareness programs with various stakeholders. Ek Bharat Shrestha Bharat initiative was announced by our Honorable Prime Minister of India on 31st October 2015 on the occasions of the 140th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the first Deputy Prime Minister of India, and also known as the Iron Man of India, who was responsible for unifying 562 princely states of the country. Honorable Prime Minister propounded that cultural diversity is a joy that ought to be celebrated through mutual interaction and reciprocity between people of different states and union territories, so that a common spirit of understanding resonates throughout the country. It is in this backdrop that the National Commission for Women, in an endeavor to raise awareness among the people towards the diverse races and cultures, is organizing this important seminar today on racial diversity sensitization in collaboration with BPRND, Spooner, and National Commission for Minorities to celebrate the unity in diversity of our rich nation and to maintain and strengthen the fabric of traditionally existing emotional bonds between the people of this great nation. It aims to sensitize the front workers and police personnel towards the diverse races and culture existing in the country. It has been termed that police personnel are the first point of control and first point of contact when a person faces any crime, any problem, and therefore capacity building and sensitization will contribute to understand the diversity and able to serve the overall satisfaction of its citizens of India. There is a pressing need to sensitize and educate the people about the fundamental rights of every citizen of this country and as invested in the Constitution of India, and also respect the people belonging to
various regions and culture. A person from Leh Ladakh, while in Kerala, or a student from Arunachal Pradesh, while in Kutch, Gujarat, or India, should not feel uncomfortable or like an outsider, stranger in the place where they are. People should be able to intermingle comfortably with a feeling that we are all Indians and respect each other, and also inculcate our understanding and our mutual understanding so as to have a peaceful coexistence. The concern of people, especially from Northeast India, as well as people from other minority communities, from regions like Ladakh, Darjeeling, etc., living in different parts of the country, especially in the metropolitan cities. They face problem of various discrimination, and therefore today we are here to discuss the challenges and also to alleviate the insecurity and the ill feeling faced by them. It encompasses the larger issue of national integration of the people of India with its emerging diversity. The issue and the concern of these people in the metro cities have therefore larger and deeper implications for the entire process of building the unity and integrity of this large and this great nation. Mutual understanding and trust are the foundation of India's strength, and all citizens should feel culturally integrated in all corners of India. The technology has narrowed down distance, time, in terms of contact and communication, and it is important to use this means to further human bonding and a common approach to nation building. There is a growing perception among the people from the Northeast and the Ladakh that they are targeted for the only reason of their difference in features. The need of the hour is therefore to disseminate information and to exchange of culture and sensitizations so as to avoid any misperception that people may be harboring due to opinion formed upon one's appearance, culture, and labeling everyone with opinion formed upon on some experiences. We all coexist in this society, and therefore the strength of Indian nation is unity in the midst of diversity. Ethnic and cultural differences should be a cause for celebration and not to raise barriers. Today we are very fortunate to have esteemed panelists who would be speaking and who would be sharing their experiences. These resource persons are from various walks of life, and therefore we are so privileged to have the renowned, eminent speakers, and they would be also sharing the way forward as to how we can build an integrated India which would be free from any discrimination on the basis of race, creed, religion, etc. Once again, I extend a very warm welcome to all of you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री अशोली चलाई जी, संयुक्त सचिव नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कहते हैं कि अनेकता में एकता ये भारत का मूल भाव है और उसी मूल भाव को हमें आत्मसात आज करना है। मैं बहुत ही आदरपूर्वक अनुरोध करूंगी श्री हिबू तमांग जी से, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। सेवा ही जीवन है, समर्पण ही मूल भाव है। इसी भाव के साथ पुलिसिंग के माध्यम से जनमानस की सेवा में अपना जीवन दे रहे हैं हिबू तमांग जी। जोरदार तालियों के साथ हिबू तमांग जी का स्वागत। Good morning. Namaskar. Chief Guest, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Honorable Minister of State, External Affairs and Education, Government of India, Madam Rekha Sharma, Honorable Chairperson, National Commission for Women, Government of India, Madam Syed Shahzadi, Honorable Officiating Chairperson, National Commission for Minorities, Government of India, Most respected Sri Balaji Srivastav, Director General,
Bureau of Police Research and Development, Madam Mita Rajiv Lochan, Member Secretary, National Commission for Women, Sri Asoli Chalai, Joint Secretary, NCW, Madam Lilavati, Senior Coordinator, NCW, Devlena and Team NCW, eminent panelists, distinguished guests, brothers and sisters from Northeast and Delhi, friends from various police organizations, media friends, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to express my profound gratitude to National Commission for organizing such a grand program in collaboration with BPR&D, Minority Commission, and Delhi Police Spooner Unit, Special Unit for Northeast Region. Today at Vigyan Bhavan, New Delhi, dated 26 March 2022, on racial diversity and sensitization. Indeed, it has been a continuous process of carrying toward the dream and mission of our Honorable Prime Minister of India for transforming India into Ek Bharat, Shresth Bharat amidst diversity. The initiative of Ek Bharat, Shresth Bharat was announced by Honorable Prime Minister of India on 31st October 2015 on the occasion of 140th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Through this innovative measures, the knowledge of the culture, tradition, and practice of different states, youths will lead to an enhanced understanding and bonding between the states, thereby strengthening the unity and integrity of India. India is home to more than 2,000 ethnic groups, and every major religion is represented. There are several languages spoken. However, despite our differences in terms of races, linguistic, cultures, customs, and traditions, we are one Indian. Our endeavor will be to promote unity and unity in diversity at all costs. Very unfortunately, and I feel bad to say, that time and again, the Indian citizens hailing from Northeast states has to face discrimination in different forms and being used derogatory adjectives against them. Similarly, the Gorkhas of Darjeeling and Ladakhis has to face the same problem in metropolitan cities like Delhi. As such, people of Northeast India feel themselves alienated from mainstream. This seriously needs to be removed, and the same is possible only through mindset change and mutual understanding. The right mindset changes everything because it changes how you look at things. The Spooner Unit of Delhi Police, since its inception from 14 February 2014, has been putting all-out efforts to sensitize the Delhi Police personnel, resident welfare associations, and other stakeholders through various awareness programs about the people hailing from Northeast states and their cultures, so that the problems faced by them in metro cities are properly addressed. Bhasha Sangam Abhiyan, introduced by the Ministry of Education, Government of India, by developing a mobile app, namely Azadi Ka Amrit Mahotsava, has been an innovative initiative of Government of India
for language learning. Every citizen of India will have an opportunity to learn our Raj Bhasha, Rashtriya Bhasha, besides many indigenous languages spoken in India. This will pave mutual understanding and trust among citizens of India. Understanding languages can also play a major role in strengthening the national integration. Last but not the least, once again I am thankful to NCW, BPRND, National Commission for Minorities as well for the program being organized in a close, collaborative way. I hope the outcome of today's deliberation will immensely be beneficial and fruitful. I also extend my heartiest thanks to dignitaries present here and all the participants. Let me conclude my speech by citing a quote of Mahatma Gandhi on unity in diversity. Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the taste of our civilization. मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलना चाहता हूँ। विविधता में एकता, एकता तक पहुँचने को हमारे क्षमता, हमारी सभ्यता की सुंदरता और परीक्षा होगी। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय हिबू तमांग जी। मजबूत समाज का आधार राज्य के साथ समाज के तालमेल से ही बनता है और इसी तालमेल की कड़ी है अहम कड़ी पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जॉइंट कमिश्नर फॉर पुलिस माननीय हिबू तमांग जी। वी आर ग्लैड दैट वी हैव मिस सैयद शहजादी जी, ऑफिशियलिंग चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। सैयद शहजादी जी ने आधारभूत ढांचा विकास योजनाओं में माइनॉरिटीज की उपयुक्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके रहन सहन के स्तर में सुधार करने, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी वो लगातार सुनिश्चित कर रही हैं। अपने आयोग के माध्यम से सैयद शहजादी दी तकनीकी शिक्षा के माध्यम से माइनॉरिटीज के कौशल विकास पर लगातार जोर दे रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस सैयद शहजादी। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मंच पे उपस्थित विराजमान एमओसो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर आर.के. सिंह जी और महिला कमीशन की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी और मेरे साथीगण, आप सबको प्रणाम और आदाब। भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो सरदार वल्लभ भारत के लौह पुरुष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर भारत के प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत का एक संकल्प लिया है, जिसमें सरदार पटेल ने भारत की 562 रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया है। उसी प्रकार मोदी जी भी इस देश को एक अखंडता के रूप में, एक सांस्कृतिक संप्रदाय के रूप में एक बनाना चाहते हैं। अगर हम इस भारत के महान संत श्री आदि शंकराचार्य जी ने देश के चारों ओर पे, पूरब में, पश्चिम में, साउथ में और नॉर्थ में 4 धामों की स्थापना की है, जिसके द्वारा हम इस भारत को एक आत्मा में जोड़ने का प्रयास श्री आदि शंकराचार्य जी के तहत किया गया है। क्योंकि अब साउथ से अगर आप नॉर्थ को जाएंगे, केदारनाथ 1000 ऑफ किलोमीटर जाकर आप वहां कर देखेंगे, आप वहां की भाषा नहीं समझ पाएंगे, आप वहां का वेशभूष, वहां का आहार, वहां के विचार आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमको एक सूत्र में बांधने के लिए यहाँ कोशिश पूर्व भारत में भी हमें की गई है। और भारत की उन्नति के बिना, यहाँ खासकर महिलाओं की उन्नति के बिना देश श्रेष्ठ नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने जो प्रथा 70 साल से मुस्लिम महिलाओं के प्रति थी, जो 3 तलाक से थे, 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को मोदी जी ने आज 3 तलाक से मुक्ति देकर भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और भारत में एक हमको ऐसा महसूस होता है कि ये स्वतंत्रता और ये हम जो इंडिपेंडेंट और फ्रीडम को जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे कई लोगों के स्ट्रगल से, कई वीर जवानों के, हमारे कई सोल्जर के सेक्रीफाइस से आज हम जो फ्रीडम को अनुभव कर रहे हैं, वो बिल्कुल सिर्फ हमारे शहीदों के लिए और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है वो कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए
उसको एक सूत्र में बांधने के लिए नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास है। इसी में ही आर्टिकल 370 को रद्द करके कश्मीर को भारत का विभिन्न अंग में एक बनाकर अखंडता की प्रेरणा भारत के प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मुझे लगता है हमारी अनेक भाषाएं हैं, हमारे भारत में अनेक भाषाएं बोलते हैं, अनेक संस्कृति है, अनेक संप्रदाय है, अनेक विचारधारा है, लेकिन इन विचारधाराओं को, इन संस्कृति को, इन संप्रदायों को सबसे एक जोड़ने के लिए हमारे लिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत की आवश्यकता है। ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये काम सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ये काम, ये जिम्मेदारी हर के भारत के नागरिक पे है। हम सबको जुड़ाए, एक दूसरे से जुड़ाए। वो किसी भी कल्चर को फॉलो करते होंगे या किसी रिलीजन को वो बिलोंग करते होंगे या किसी भी गॉड को वो मानते होंगे, लेकिन भारत की आत्मा एक है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। और भारत एक ऐसा श्रेष्ठ देश है जो दुनिया पूरी हमारी ओर देख रही है। दुनिया सोचती है, अरे जब दो रिलीजन के लोग अन्य देशों में मिलकर रहते नहीं पाते, बार बार झगड़े होते हैं, भारत में इतने रिलीजन्स के लोग कैसे मिलकर रहते, भारत में इतनी भाषाएं बोलने वाले कैसे रहते? ये हमारा एक ही सूत्र है, हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी सनातन विचारधारा यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यहाँ मैं इस मौका देने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ हमारे व्यक्तिगत रूप से भी हम जो भारत को चाहते हैं वो भारत का निर्माण करने में हम सब सहयोग दें। बस ऐसा मत सोचिए कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप एक आइडियोलॉजिकल एक छोटी बात को सोचिए। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा कोई भाषा बात करता है क्या? नहीं करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके बच्चे की भाषा समझ पाते, क्या उसको भूख लग रही है, क्या वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, या उसके पेट में दर्द। उसी प्रकार हमारी भावना को छोड़कर हमको आत्म से और अपनी एक दूसरे की भावना से इस देश को अखंड करने में हमारा योगदान देना है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। एक अच्छी सोच समाज को पॉजिटिव चेंज लाती है और यही संदेश सैयद शहजादी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, आपका आभार यहाँ पर आने के लिए और ये संदेश हम तक पहुँचाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि एक बेहतर समाज तभी बनता है जब राज्य, समाज और लोगों का एक बेहतर तालमेल हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस तालमेल में पुलिसिंग एक अहम भूमिका, एक अहम कड़ी अदा करता है। हम सभी जानते हैं कि BPRND गृह मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण संगठन है और भारतीय पुलिस बलों की अनिवार्य आवश्यकता है। ब्यूरो ने हाल ही में पुलिसिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्र के लिए अपनी प्रतिबद्ध सेवाओं के 51 साल पूरे किए हैं। राज्यों और यूटीज के पुलिस बलों की आधुनिकीकरण और कामकाज में सुधार की पहल को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है BPRND। इसी दिशा में डायरेक्टर जनरल श्री बालाजी श्रीवास्तव जी हमारे बीच में मौजूद है, जो कि अपने अथक प्रयासों से सरकार के इस ध्येय की पूर्ति कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत। BPRND श्री बालाजी श्रीवास्तव, डायरेक्टर जनरल, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। माननीय केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, माननीय अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग श्रीमती रेखा शर्मा जी, माननीय कार्यवाहक अध्यक्षा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सुश्री सैयद शहजादी जी, मेंबर सेक्रेटरी NCW मिस नीता रविलोचन, जॉइंट सेक्रेटरी NCW श्री अशोली चलई, my colleague from the CADA, Joint Commissioner Spooner, Delhi Police, Shri Hibu Tamang, Senior Coordinator NCW, Sushri M. Leelabati, प्यारे साथियों, देवियों और सजनों, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जी से का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने BPRND, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ और दिल्ली पुलिस के स्पूनर के सहयोग से ये रेशियल डाइवर्सिटी सेंसिटाइजेशन विषय पर इस संगोष्ठी को आयोजित करने की पहल की है, जो कि हमारे जैसे बहुल और विविध समाज एवं राज्य व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष परंपरा, संस्कृति, धर्म, भाषा, त्योहार, व्यंजन और बहुत से अन्य मामलों में विविधताओं का एक देश है। विविधता में एकता की विशेषता ही हमारे देश की सही पहचान है। विभिन्न जातियों और समुदाय के लोगों की संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ संयोग ने विभिन्न मतभेदों के बावजूद अपनी एकता और एकजुटता को बनाए रखा है। फिर भी समय समय पर हमारी समृद्ध विविधता ने
छोटे या बड़े स्तरों पर कई चुनौतियों का सामना किया है। प्रजातीय, भाषाई, जात और क्षेत्र आधारित पहचान अक्सर समाज में संघर्ष और तनाव का कारण बनी है और बनती रहेंगी। इसलिए समाज के सभी वर्गों और सरकार के सभी विभागों को संवेदनशील और शिक्षित करना न केवल हमारे जीवन के तरीके को संरक्षित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, बल्कि हमारे सभी नागरिकों के लिए शांति, समृद्धि और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक आवश्यक भी है। भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर अक्सर जोर दिया है कि हमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना चाहिए, ताकि पूरे देश में आपसी समझ की एक समान भावना गूंज सके। पुलिस का प्रथम कर्तव्य समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है और यह उन्हें समाज में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स में से एक बनाता है। हमारा ब्यूरो, द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD को देश में पुलिस बलों को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और उन्हें उभरती हुई चुनौतियों से सामना करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, बौद्धिक एवं ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज से लैस करके प्रभावी रूप से बदलने का जो अधिदेश प्राप्त है, उसको हमें आगे बढ़ाते रहना है। भारत में पुलिस के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और उन्हें समाधान प्रदान करने के लिए अधिदेश को पूरा करने के लिए विभिन्न वर्ण समूहों के साथ प्रोफेशनली और एम्पैथेटिकली व्यवहार करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारा ब्यूरो पुलिस कर्मियों के बीच सॉफ्ट स्किल्स विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। साथ ही पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप, पीपल फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशंस, जेंडर सेंसिटाइजेशन, अन्य विषयों पर परियोजनाएं भी शुरू की हैं हमने। BPRD देवियों पर सज्जनों ने पुलिस कर्मियों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन कर्मियों के क्षेत्र में अपने सहयोग की सुविधा के लिए 15 जुलाई 2021 को NCW के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका विजन तमाम बाकायदा विजन का सारा श्रेय हमारी चेयरपर्सन NCW को जाता है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस MOU के अनुसार BPRD के अधीनस्थ हमारे 5 CDTIs हैं, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, कोलकाता, जयपुर और गाजियाबाद में, और एक हमारी बहुत बड़ी अकादमी है भोपाल में, जिसे CAPT कहते हैं हम, सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग। और इनके साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पुलिस द्वारा भी अभी तक 10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए हमने, जिसके तहत, और ये वित्तीय वर्ष 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके तहत 310 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। देवियों सज्जनों, रेशियल डाइवर्सिटी सेंसिटाइजेशन से संबंधित अन्य प्रमुख मुद्दा है शैक्षिक और नौकरी की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों, विशेष रूप से देश के दूर दराज के हिस्सों से हमारे महानगरीय शहरों में छात्रों का प्रवास। ये अनुभव किया गया है कि सांस्कृतिक और भाषाई अंतर के कारण देश के कुछ जातीय समूहों जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ भेदभाव किया जाता है, जो कई बार डराने धमकाने से लेकर हिंसा में भी बदला जाता है। महानगरों में पुलिस बल इनके हितों की रक्षा के लिए उपाय और रणनीति तैयार कर रहे हैं, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि बड़े स्तर पर समुदाय को भी जमीनी स्तर पर संवेदीकरण कार्यक्रमों में बार बार और सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले
मैं एक बार फिर माननीय केंद्रीय विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री राजकुमार रंजन सिंह जी का, श्रीमती रेखा शर्मा जी का, माननीय अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य सभी विशिष्ट वक्ताओं का धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संगोष्ठी में हुए विचार विमर्श से हमारे देश में रेशियल डाइवर्सिटी से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर सभी स्टेक होल्डर्स को शिक्षित और संवेदनशील बनाने में एक लंबा सफर तय होगा। हिबू हमारे से पहले बड़ा अच्छा कोट बता गए हम सबको महात्मा गांधी जी का। इतना अच्छा कोट मुझे वो लगा कि मैं दोबारा उसको दोहराना चाहूँगा। महात्मा जी कह गए थे कि विविधता में एकता तक पहुँचने की हमारी क्षमता ही हमारी सभ्यता की सुंदरता और परीक्षा भी होगी। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत आभार आपका। बीपीआरएनडी हमारे पुलिस बलों के समक्ष उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनकी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। आपका बहुत बहुत आभार बालाजी श्रीवास्तव, डीजी बीपीआरएनडी। और मैं चाहती हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ तालियों का महोत्सव इस सभागार में हो जाए इस शानदार आयोजन के लिए, शानदार कार्यक्रम के लिए। और बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करूंगी अब ऑनरेबल चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है उनका नाम, जो संकल्पित रही है महिलाओं के लिए, जागरूकता के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। जोरदार तालियों के बीच ऑनरेबल चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माननीय रेखा शर्मा जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माननीय विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, our Director General BPRND Shri Balaji Srivastava ji, Official Chairperson National Commission for Minority जिनका अभी आपने भाषण सुना, जोरदार भाषण सुना, मिस सैयद शहजादी जी, Joint Commissioner of Police Punar Shri Hibu Tamang ji, my member Secretary Meeta Rajiv Lochan, Asholi Challai Joint Secretary NCW, मेरे सामने बैठे नेशनल स्टेट कमीशंस के चेयरपर्सन्स, मेंबर्स, माय एक्स मेंबर इज़ आल्सो हेयर, सोसो साइजा, हाय। बहनों और भाइयों, एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी एंड वी आर नोन फॉर आर डाइवर्सिटी। हाउ विल यू लाइक अ प्लेट ओनली full of one kind of dish? How will you like a garden only one kind of flower? Because we have so many colors in nature, our nature is so diverse. Indian nature, if you see from Kashmir to Kanyakumari, how many seasons we have, how many, if you see the weather, how diverse is the weather. The nature has given us the diversity, and so we are diverse people and we are known for this beautiful diversity. So first we should all applaud the beautiful India, what we are, and Indians what we are. Since my childhood I am lucky that I studied, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व करने वाले ज़्यादातर उनके बच्चे होते थे, एंड दे यूज्ड टू बी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड वी नेवर एवर हेजिटेट टू टॉक टू एनीवन। हमें कभी नहीं लगता था कि ये नॉर्थ ईस्ट से है, बिकॉज वी ऑल वर टुगेदर। एंड देन आई गॉट मैरिड टू आर्मी ऑफिसर, and we all know that in army we never think of caste, creed, religion, and we never ever thought from where we have come. In fact, we learned so much from each other, and we women love diversity because we love different kinds of saris. And if you go from if you see the Manipur, there are so many beautiful saris there. South Kanjivaram, so much beautiful. Banaras, such beautiful saris we have. So and the dishes we started learning from each other. It is such a beautiful thing when you sit together and learn from each other rather than crib that वो ऐसा दिखता है, या आप किसी को criticize करें उसकी ड्रेस पे,
उसकी जगह अगर हम एक दूसरे को सराहें, दूसरे की खूबसूरती को सराहें, तो मुझे लगता है हम इतना कुछ सीख सकते हैं इस देश में. In fact, my family is so diverse. My family and extended family, we have people from all the religion, whether Muslims, Christians. We have from South. One of my niece is married to a South Indian. So we are such a diverse family, and we love when we sit together. We laugh together. We love sitting together and learning from each other. एंड दैट शुड बी, आई थिंक हम जो भारत में पहले कहते थे कि रोटी और बेटी का रिश्ता जहाँ हो जाता है वहाँ कभी टूटता नहीं है. हमें इसको ये कहने की जगह कि इसका शादी वहाँ ना हो या इस जाति इस धर्म, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर जीना सीखें. When I'm saying about this, I'm not saying about the religion conversion. That is, you can be in the same religion and still get married, and that is what our family is doing, in what I have seen in my family. They are following their own religion, but still they are married to each other. Indian Constitution, if you see that this is the first kind of constitution which has from its conception given equality to everyone, to anyone. We are all equal by our constitution, but still somewhere I don't know how this inequality creeped in. आज जब हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया, ये देने की जरूरत पड़नी क्यों चाहिए थी? हम तो बहुत सदियों से एक साथ रह रहे हैं. जो भी भारत में आया, जिसने भी इस पे चढ़ाई करी, वो भारत का होके रह गया. उसने भारत से कुछ सीखा और हमने उनसे कुछ सीखा. फिर हमें इस नारे की जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसी चीजें आ गई जो हमें एक दूसरे से दूर करने लगी. और मैं कहती हूँ हमें पास लाने के लिए मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया ओनली सीज नेगेटिव थिंग्स दीज डेज. अगर वो हाईलाइट करता है तो नेगेटिविटी हाईलाइट करता है, कभी वो पॉजिटिविटी हाईलाइट नहीं करता. वो कभी ये नहीं दिखाएगा कि हिंदू मुस्लिम बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं या शेयर कर रहे हैं. वो जहां लड़ाई हो रही होगी उसको हाईलाइट करेंगे. सो मेरे साथ आज मीडिया के लोग भी हैं. आई विल रिक्वेस्ट देम कि दिस इज द टाइम वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग इंडिया ए श्रेष्ठ भारत. वी आर एक ऑलरेडी. The police also plays a big role in this, and I'm happy that BPRND head is here, who are training police, who are sensitizing police, who are making training programs for the police. They are playing very big role, and they can also enhance this, because the sensitization of police is very, very important, because any complaint which comes to the police, they have to handle. अगर नॉर्थ ईस्ट से जो स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, अगर उनकी कोई कंप्लेंट पुलिस के पास जाती है, तो वो स्पूनर बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले कर रहा है. 2 हिबू हैं हमारे यहाँ पे, एक पुलिस में भी हिबू हैं, वो भी अभी आएंगे उसमें एक पैनल डिस्कशन में. दोनों बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं. लेकिन इसमें जो नीचे के ऑफिसर्स हैं, उनको जो आयु लेवल के लोग हैं, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर द इंटरफेस ऑफ द पुलिस. दे आर द वन हु आर इंटरैक्टिंग विद दीज कंप्लेनेंट्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन दैट देयर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर women face problem, and their behavior should be good. That we should, in fact NCW is also doing this role of sensitization these police officers, and we will in future also we will be playing this role again. As you know, I think people from Ladakh are also there. Jule, if they are there, they say Jule for Namaskar, and I have been to Ladakh, and one of the positive thing as a army officer's wife is that you can see and you can live throughout India. तो लद्दाख से लेकर मैं नॉर्थ ईस्ट तक सब जगह रही हूँ, और मैंने उनके कल्चर को सीखा है. आजकल हम लोग यहाँ बैठे ही सब कुछ देख सकते हैं. इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है
इंटरनेट, और हम बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से या सीखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन हम लोग नेगेटिविटी भी सीख रहे हैं। जहां हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं साइबर वर्ल्ड में, वहीं साइबर वर्ल्ड में हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बढ़ाती हैं, स्पेशली फॉर विमेन and women from northeast who are living in Delhi or any metropolitan cities. We have seen that they are also been cyber attacked many a times, and this problem is also been handled by the police cyber cells. But again we need to capacity build these cells, and we at NCW are doing, but I think they have to make them trained to handle these kinds of cases. But again, what I was saying, cyber or internet will play a big role. But I have one suggestion: why can't we exchange our students like we exchange in other countries? अगर हम नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स और यहाँ के स्टूडेंट्स या साउथ के स्टूडेंट्स आपस में एक्सचेंज करें, एक दूसरे की स्टेट्स में जाएं, उनकी रहन सहन सीखें, उनका खान पान सीखें, मुझे लगता है उससे हम लोग बहुत क्लोज फील करेंगे। और ये एक्सचेंज सिर्फ हॉस्टल में रहने का नहीं होगा, अगर हम फैमिलीज में उनको इंटीग्रेट करें, अगर यहाँ के लोग जाकर नॉर्थ ईस्ट की फैमिलीज के साथ रहें तो बहुत कुछ उनके बारे में सीख सकते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान पान, एवरीथिंग यू कैन लर्न। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगी, बट बिकॉज आवर चीफ गेस्ट इज ऑल्सो वेटिंग एंड ही विल बी एड्रेसिंग, I will say that NCW is there for every student who are here from any other city, whether they are from Leh Ladakh or northeastern states. They can always come to us in any problem, and in fact for not only problem you can exchange ideas. Why can't we have a program in schools and colleges where we can exchange ideas and learning from each other? So we will be doing these kinds of programs also in future, and with that I will again thank BPRND, Spooner and Minority Commission for collaborating us. That's why I think the hall is full and so many colorful faces are among us. Thank you so much. Vande Mataram. बहुत बहुत आभार आपका माननीय रेखा शर्मा जी, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और बिल्कुल सही कहा कि एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की बात और व्यवहार समाज को ताकतवर बनाएगा। आइए संकल्प लें और कहें एक दूसरे से कि सारी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और विनम्र निवेदन करूंगी अब माननीय डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय जी से कि वो आए और हम सभी उनको सुनना चाहते हैं। आप 4 दशकों तक मणिपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में आपने सेवाएं दी हैं और उसके बाद मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय में पूर्वोत्तर से मंत्री को शामिल करना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जोर देता हुआ नजर आता है। और बतौर विदेश राज्य मंत्री आप विदेशों में प्रभावी तरीके से लगातार भारत का पक्ष रख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। और हम सभी सुनना चाहते हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी को। जोरदार तालियां। नमस्कार, खुरमजरी। चेयरपर्सन National Commission for Women, Srimati Rekha Sharma ji, and officiating chairperson National Commission for Minority, Srimati Shahzadi ji, and DG BPR and D, Shri Balaji Srivastava ji, Joint Commissioner for Police, Shri Hibu Tamang ji, and Mitaji, Member Secretary, NCW, and A. Aswali ji, Joint Secretary, NCW, and many ex-members, among them Madam Soso Saiza ji, and other distinguished participants, and STEM expert and resource person. It is indeed a pleasure to be here today. Rather, it gives me immense pleasure to be able to share a few thoughts on the needs for diversity sensitizations. I would be very happy if after 2 days discussion, a few concrete actions could be developed.
These could be presented to appropriate authorities for consideration, for proper follow-up and implementations. Friends, I do not need to mention to this august gathering regarding India's plurality and diversity. Its myriad culture, tradition, and ways of living, we are all aware of our diversity, albeit subconsciously. We have different features, speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practices different religions, and speak different tongues. The very fabric of our nation has been woven by diverse linguistic, cultural, and religious thread held together into a composite national identity by a rich history of cultural evolutions. Friends, what I feel imperative for me is to highlight here the need to consciously manifest or translate our subconscious awareness of diversity to a conscious action. What I am really saying is that although we are well aware of the diversity among us, albeit subconsciously, we sometimes take the diversity for granted. We are not always mindful of the different way of life, a different value and belief system, and that the person whom we are interacting with is from. We will be successful if only we are able to transform our subconscious awareness of our diversity to a conscious action. This will enable us to weave respect for different cultures and ways of life into our everyday actions. Honorable participant, experts, the spirit of mutual understanding amidst a shared history has enabled a special unity in diversity. This stands as a tall flame of honor in our nation-building exercise, in our nationhood. This should be cherished today, and this should be nourished into the future. Today's event on racial diversity sensitization aims to promote the spirit of national integration and unity. It is an effort to sensitize the frontline workers and police officials towards the diverse races and culture coexisting in the country. I firmly believe that such sensitization event and drives will definitely help bring empathy in our action towards each other. Above all, such event will also educate the people about the fundamental rights, about the way of life envisaged in the Constitution of India, a way of life which ought to respect the people belonging to various regions and cultures. I must congratulate the organizers, National Commission for Women, National Commission for Minorities, SPUDER, and BPR&D for this excellent initiative. Congratulations. Friends, anyone from any corner of India should not feel uncomfortable or unwanted in any place in India. People should be able to intermingle comfortably with a feeling that we are all Indians. Everyone should be accepted by others naturally with respect, dignity, and understanding. News reports and
Of course, personal interactions sometimes suggest that instances still occur where students and people from Northeast India and Ladakh regions are treated differently. Reasons vary from appearing different to living differently and so forth. Ideally, this should not happen. More often than not, these avoidable incidents happen due to lack of understanding and appreciations of each other. It happens due to frequent stereotyping bias that every one of us carries. Maybe due to a few life experience or maybe to word of mouth experience. Stereotyping needs to be avoided. The needs of the hour is to disseminate information and sensitization so as to avoid any misperceptions. Mutual respect and understanding are key to Indians' foundational strength. Friends, sensitization effort should not only be institutional. Students, civil society, and media have a huge stake and, in fact, are more effective tool for this. But above all, we personally, each and every one of us, need to lead by example. Respect for one another is a two-way street. You give one for which you receive one. Let us try and understand one another. Mutual respect for one another will naturally flow once we understand each other. Friends, Northeastern region and Ladakh are in the center of Honorable Prime Minister's mind. It is first time in our history that such dedicated focus to these regions have been given by any Prime Minister of India. Educating and promoting about Northeast people and culture, forming positive opinion about the community has been his foremost intention. Now, it is our responsibility to take this vision ahead. We need to create friendlier space, create opportunities, and take chances, endure welcoming gesture, and connecting ourselves through social discourses. Festivals and art, these are important steps to enable cultural integration. Culturally, we are immensely blessed, so our effort must be to build more inclusive society, compromising of all colors and music. Every stakeholder must initiate and contribute in their own capacity to bridge the gap of this cultural divide. We cannot afford to, and ideally should not aspire to live in silos. I congratulate the National Commission for Women's team, Chairperson Srimati Rekha Sharma ji, for organizing this initiative in collaboration with Spooner, BPR&D, and National Commission of Minority. I wish fruitful deliberation ahead. Jai Hind, Vande Mataram. बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी MOS एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन रेशियल डाइवर्सिटी सेंसिटाइजेशन इस आयोजन का मकसद हम सभी जानते हैं कि 21वीं सदी के भारत को ओछी मानसिकता के जहर से दूर रखना, नस्लीय भेदभाव से दूर रखना, इस संकल्प को सिद्धि और शक्ति मिले, हम सभी की यही मनोकामना। मैं बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करूंगी सीनियर कोऑर्डिनेटर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मिस M लीलावती से कि वो आएं और धन्यवाद संबोधन दें।
Honorable Minister of State for External Affairs and Education, Sri Rajkumar Ranjan ji. Honorable Chairperson, National Commission for Women, Madam Rekha Sharma ji. Honorable Chairperson, Minority Commission, National Commission for Minority, Ms. Syed Shahzada ji. Director General BPRND, Sri Balaji Srivastav ji. Member Secretary, National Commission for Women, Madam Meeta Rajiv Lochan. Nodal Officer of Spooner, Sri Hibu Tamang, Joint Commissioner of Police. Namaskar. As we come to the end of the inaugural session of today's program, it is my pleasure to propose the vote of thanks. I, on behalf of National Commission for Women, extend a hearty thanks to Honorable Minister Sri R.K. Ranjan ji for gracing this occasion as the chief guest and for an enlightening and insightful address. We are extremely grateful to you, sir, for having acceded to our request in spite of having a busy schedule and exhorting us beyond measure. His presence today in this function has immensely enhanced its importance. We are extremely grateful to you, sir. I also take this opportunity to express my deep gratitude to our respected Madam Rekha Sharma ji, Chairperson NCW, for the initiative she took in holding this program and the constant support and guidance throughout. I would like to thank the collaborating partners of today's program, National Commission of Minority, Bureau of Police Research and Development, Spooner, for the unstinting support and cooperation. And I would also like to express my sincere thanks to this august gathering for your presence here. Thank you so much indeed. So we now proceed to the next session of today's program, panel discussion. Thank you so much. आप सभी माननीयों का बहुत बहुत आभार और मैं चाहती हूं कि हमने इतने अच्छे विचार सुने, माननीयों को सुना। एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव इस पूरे सभागार में, क्योंकि अगला सेशन भी बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है। हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं रेशियल डाइवर्सिटी सेंसिटाइजेशन के लिए और ये पैनल डिस्कशन है। बहुत ही खास अनुभवी चेहरे हमारे बीच में होंगे और जो इस पैनल डिस्कशन को कंडक्ट करेंगे, पहले उनके बारे में मैं आप तक पहुंचा दूं। हमारे बीच है हसीना खारबीह जी, जो इस पूरे सेशन को मॉडरेट करेंगी। हसीना जी, आप फाउंडर हैं इंपल्स एनजीओ नेटवर्क की, जो बतौर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बीते 31 सालों से इंडिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश में काम कर रही है। अक्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इश्यूज रोकने की दिशा में इंपल्स सशक्त माध्यम है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने में, उस पर काम करने में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं हसीना खारबीह जी। एक बार जोरदार तालियां हसीना जी के लिए। 80,000 से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस इन्होंने देखे हैं, समझे हैं, उनको जाना है और नीति आयोग द्वारा कुछ दिन पहले ही विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो पैनलिस्ट हैं और हमारे बीच में, उनका भी एक बार तारुफ करा देती हूं। मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट फ्रॉम लद्दाख। मिसेस सोसो शाजिया, एक्स मेंबर एनसीडब्ल्यू। श्री तजिंदर सिंह लूथरा जी हमारे बीच, डायरेक्टर नेशनल पुलिस मिशन, रिसोर्स पर्सन नॉमिनेटेड बाय बीपीआरएनडी। श्री हिबू तमांग जी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। हमारे बीच मिस लिंचन लामो जी, मेंबर फ्रॉम लद्दाख, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। और साथ ही हमें सुनने का मौका मिलेगा मिस्टर बाईचुंग बूटिया जी को, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन। मिस पूजा एलनबम जी, एसडीओ लामफिलेट इम्फाल, वो भी यहां पर मौजूद हैं। मिस्टर आदित्य राज कौल, एग्जीक्यूटिव एडिटर, टीवी9 नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। साथ ही हमारे बीच मिस अजाइलियू न्यूमाई भी मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी हैं और हेड हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अब पैनल डिस्कशन, उससे पहले एक बार आप जोरदार तालियां सुनवा दें ताकि लगे कि पूरे मन के साथ आप यहां पर उपस्थित हैं। अनेकता में एकता, ये हमारे भारत का मूल मंत्र है, लेकिन शायद कहीं कुछ अधूरा है, कहीं कुछ छूट गया है, जिसे पूरा करने की जरूरत है। एक ऐसी सोच जो हम सबके बीच में घातक है, जो हम एक दूसरे को अलग रखती है, इस सोच को हटाने का संकल्प आज हमें लेना है। और यही एजेंडा, यही मकसद इस खास संगोष्ठी का, रेशियल डाइवर्सिटी सेंसिटाइजेशन। खास पैनल मंच पर मौजूद है।
हसीना खारबीब जी से संचालित करेंगी और मैं अनुरोध करूंगी कि आप आइए और संचालन शुरू कीजिए। A very good morning to everyone. And I think taking from the inauguration, this program today is very apt in terms of bringing together a very diverse resource people with lots of experience. I think whatever I'm going to be introducing each one of them will be too small, in fact, to read the bio and the experiences of everyone. But taking contextually the seminar, the theme that has brought together, I think, the most important convergence, not just the National Commission for Women, but the Bureau of Police Research and Development, the Special Police Unit of Northeastern Region that was set up to basically discuss, to address the situation of racial diversity in our country. But let's look at it from the positive side as we move in terms of what this discussion will be bringing today and how each of the panelists will be providing their experiences, their input towards a progressive India, a country which actually bring together diverse communities, culture that celebrate that, where the world looks up to that celebration, to that diversity. So this discussion will look into the positivity of inputs, feedback, and also discussing how does one go forward. With that, I don't have really any specific order of how our speakers, keeping that all of them sitting in this panel today are equal in terms of their experiences, equal in terms of so much of the diverse things. So I will not make it a hierarchy in terms of who I'm going to calling first, but how it's being placed on my table today. I am going to introduce you our first speaker, Mr. Sonam Wanchuk, who is an Indian engineer, an innovator, education reformist from Ladakh. I know that we both are Ashoka Fellows, and it's wonderful to have another Ashoka Fellow on the dais. He is the founding director of the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh, SIMOL, which was founded in 1988. He is also known for designing SIMOL campus that runs on solar energy and uses no fossil fuel for cooking, lighting, or heating. Wanchuk was instrumental in the launch of Operation New Hope in 1994, a collaboration of government, villages, communities, the civil society to reform in the government school system. To know more about him and his work, I think you can Google him and his massive learning of what he has been doing so far. Now, I really wanted to bring him a perspective. A question that I'm going to be asking you is, how do you think racial diversity can be a boost in addressing climate change? Can you give some insight from your journey and elaborate this, Sonam? Because if we're looking at diversity and the climate, it's the talk of the hour. And I think diversity is where we can collaborate and bring things to perspective. Over to you. No, you're going to give your opening remarks. Yeah. So you have a 6 minute to basically open that questions to all. Hi, namaste, suprabhatam. Thank you very much. Thank you, National Commission for Women, Spooner, and National Commission for Minorities for having this discussion here. I have always considered very fortunate that I am in a country that respects diversity. There are countries who actually, root it out, but this is a country that talks of unity in diversity, and not all nations do. Now, coming to its relevance to climate change, I would say the mainstream civilization that human development has taken course of has landed us in the soup that we are in. Some 200 years ago, we were all very excited, gung-ho about industrial revolution, modernization, and all that.
but 200 years later, we can see what it has led us into. The air we cannot breathe, the water we cannot drink, soil we cannot touch, people we cannot trust. We are afraid of our very neighbors. So the mainstream course of human civilization has become somewhat frightening, and the hope in such situations is more from those who have been a little divergent, those who have been a little different or at least isolated. And these are people who are living in different parts of our country or around the world as indigenous people who have followed their own paths of development or progress in different ways, where it may not be all about material and money and possessions. It can even be about the health of the forests and the cleanliness of the water and the pristineness of the mountains. So these are civilizations that the world needs to learn from today. And if not for this diversity, we'd be all going whole hog in towards destruction. So I believe that it should be seen as a great asset, as a great thing to celebrate that we have this diversity. We have still some different ways of looking at life that are still surviving. I mean, India is a great civilization that should actually be teaching the world about it, about keeping the planet healthy and sane. You know, Vasudeva Kutumbakam is a beautiful concept. The whole planet, the entire earth is a family. Yet, our own country today kind of gone astray, chasing Western values of industrialization and materialism. We have kind of lost path, and therefore we need to rediscover, and the best places to rediscover are in the hills of Northeast and the mountains of Ladakh and the forests of South India and the Central Indian tribes. So these are our hopes of learning. It's about ignorance and understanding. You know, at an ignorant level, we kind of fear each other's diversity. It's all about ignorance, and that needs to be dispelled at the level of children's education. In schools, we should have measures so that this kind of fear is removed, this kind of difference is removed, and we understand that we are all one, and that colorful bouquet is called India. At the level of grown-ups, our media needs to play more important role in bringing people together rather than separating them. Films, all kinds of electronic, digital media can play a great role to bring people together. Why I'm saying it's about ignorance and understanding is, when you are very ignorant, you find everybody so different. If they don't look like you, if they don't have the same color or the same type of eyes, you find them different. But if you know the science behind, for example, if you go into the genetics, you know, we are so similar, so similar. Of course, we are very similar to all other human beings. There is 99.9% genetic similarity in all, and that 0.01% is what makes us different. What my sound may sound different, my looks may be different. Otherwise, we'll be all, you know, identical robots. But this is what makes us different. But then beyond that, we are not different. Leave aside differences with our fellow Northeasterners or Ladakhis or South Indians. Even with chimpanzees, we have 98.8% genetic similarity. This is Vasudeva Kutumbakam. You know, that the whole planet is a family. We are descendants of plants. So even plants are our ancestors. They are our relatives. We have 60% similarity genetically with houseflies and 50% with bananas. So what are we talking about, making, you know, the human beings of the same country, having the same aspirations, different? So therefore,
it's an asset. It's an asset rather than a liability to have a country so diverse that you will have a lot of learnings and lessons, not only for India, but for the whole world. Today, when we see the outcomes of this modernization, we see that we have managed with all our science and technology to produce viruses that are killing people left and right and center. Now, if this is what we bring our progress and advancements to, or if we nuke ourselves off in this war that might, spread, then how are we better than any tribals who are happily living in their forests? I think the so-called civilized part of the world may blow itself into a puff of smoke, and who might remain as after a viral explosion or a nuclear explosion could be the tribes of Sentinel Islands. Would you call them backward or forward? If forward is to blow ourselves off and obliterate our existence, then I would rather be one of those tribals in the forests of Andaman Nicobars. So it is these diversities that we need to learn, and lots of lessons to draw, mainly about how to live happily with minimal resources. It does not need to cost the whole planet, plunder all the forest, pollute all the lakes and rivers to be happy, and still we are not happy. And if happiness can be achieved at much smaller, simpler lifestyles like the people in the various indigenous communities, then it's the greatest lesson ever that humanity can learn. I remember in the end a teaching that Mahatma Buddha gave 2,500 years ago, and I think progress and success should be measured with that yardstick rather than what we have aped and taken from the estrayed Western countries. Buddha said 2,500 years ago that for a human being, it is a greater success to conquer a single desire than to fulfill 1,000 desires. So the current mainstream modern idea of development is to fulfill desires, and there is no end to it. We know that. Our Upanishads or all our texts only teach us that contentment is the answer, not chasing shadows. We'll be chasing all our lives and never reach happiness. But if we learn to conquer desires, that will lead us to a better planet, better life. And this is what we need to learn from our indigenous knowledge systems, indigenous people, and therefore celebrate this diversity and make it into an asset. Thank you. Thank you so much, Mrs. Sonam, for actually opening this remark. And I think when you just said rediscover, I think this meeting that we're having today, I think after with COVID and everybody coming together, let's rediscover the progress and success that India can take forward in addressing racial diversity in a much more positive manner. Learning from indigenous people in terms of climate and how we protect the environment is a way forward that education can be the bridge and the gap. Thank you for that opening. Let me now go to Mr. Baichung Bhutia, the former Indian football captain. I think Baichung does not need introduction. People look him as an icon. The young people in India look at him as the icon. He is considered as a torchbearer of the Indian football in the international arena. He is often nicknamed the Sikkimese sniper because of his shooting skill in football. 3-time Indian Player of the Year won. Vijayan described Bhutia as God gift to Indian football. Bhutia, who has a football stadium named after him in honor of his contribution to Indian football, first player to have served honor while he is still playing, has also won many awards, such as the Arjuna Award and the Padma Shri in the October 2010.
He founded Baichung Bhutia Football School in Delhi in partnership with Football by Carlos Quentin and Nike. Now, you have been in sports. You have been an icon. I mean, if we are looking at the context of our discussion today, people have never looked at you different, but they've looked at your sports as a positivity of, the diverse person that you have, represent the country. My question to you is, how do you think sports can address racial diversity more positively? And how do you think that would be one way of putting India, as a place where diversity will be more inclusive? Namaskar. Good morning. I think sports is the only medium where, nobody discriminates you from what background you come. And I think sports give you a big platform to achieve what you are, coming from different backgrounds, different culture, and different community as well. But I think in India, Northeast sports persons have played a very big role in bringing national integration with Northeast and rest of the country. Because, when I first started playing football many years ago, when I came down out of Sikkim, a lot of people did not knew where Northeast was. And to explain where Sikkim was just impossible. But now, over the years, today you go to different parts of India, many people would know just not Northeast, but also where Sikkim is. And this is because, obviously, there's been a lot of students, there's been a lot of boys and girls from Northeast working in other parts of the country. And also one of the main reason, I think, is being sports person who've gone on to represent India and introduce Northeast in terms of sports, and also, as I said, brought in a lot of contribution to national integration. So I think sports plays a big role in, bringing people together. In fact, I can share my own story. Sikkim became part of India in 1975. And I was born, obviously, after that. And my father, obviously, grew up being an independent kingdom. But I went on to play, got a scholarship with Sports Authority of India, went on to play for, India. And when I was growing up playing, obviously I used to hear a lot of stories about my father telling about Sikkim and his love for the country. But then once I started playing for India, went on to play different age group, under 16, under 19, and then played for India and captained India as well in 1999. So my father passed away in 2010. But he was born as an independent person, independent country. But when he died as a proud Indian because he saw his son playing for India. And that is because of, that's because of sports. And I think that's where there's a lot that sports can contribute. And when I played in India, I did face a lot of, and everybody from Northeast has that experience of facing racial discrimination outside. And when I played 3 years in England, and we hear so much about racism in England, but the racism what I faced in India was much more than what I faced in England when I played 3 years. But it wasn't about racism entirely in India. It was also because the awareness was not there. And a lot of times, people are not trying to intentionally be racist against you, but a lot of times you deal with a lot of people in different levels, and a lot of people are not aware of it. And that, I think, awareness now is much more. So that is, I think, one of the major thing which I feel that the National Commission for Women and rest of the people would have to bring in this awareness to all section of people in the country, because when people from Northeast come, a lot of people come by train, they don't fly all the time. First people they contact is the taxi drivers to porters there, and these people also need to be, be
given awareness program of people from Northeast. And I think tourism is one of the main reason why, we have a great understanding where we've gotten a lot of national integration between the rest of the country and Northeast, because I think a lot of tourists go to Northeast now. So if we can start bringing awareness, and sports, I think if you look at sports abroad, especially football in whole, FIFA has got this big initiative that they've taken, kick racism out. Because football is watched so much across the world, and when sporting bodies like FIFA or an English Premier League, English Association does it, then it can reach out to many people. So I feel it's important that National Commission for Women and other bodies should start tying up with a lot of sports bodies that can actually promote, bring awareness, because cricket in India is huge, and Bollywood here in India is huge. So I think if we can tie up with cricket, football federations, or a Bollywood industry where they can bring this awareness to make sure that people from the rest of the country to Northeast or Northeastern coming to the other parts of the country does not go through that kind of problem. So my suggestion, obviously, I would want to suggest is to bring in more awareness in the grassroots level. Second thing would be, we keep hearing a lot of cases, but if you compare the cases 10, 15 years ago and now about Northeastern male, female getting harassed in mainland India, it's much lesser than what it used to be 10, 15 years ago. So the government obviously has done a great work. They've brought in, we can see that we have Northeast special police here. There is a lot of other bodies that has been working with students and people from Northeast to help and protect. So my suggestion is, today we have police personnel here as well. Any kind of cases that comes in regarding racism against any, whether it's South India or Northeast, I think that action should be taken prompt, and action should be taken. Because when we read, when we are in Sikkim and read about cases that's happened against some Northeastern students or Northeastern person back in Northeast, we feel, all of us feel upset about it. But when we get to know that the action is being taken, then there's something which we feel very happy and feel very proud. So I think there would be cases in future as well. And that's where I think NCW and the police personnel across India should be taking prompt and serious action against this. What was also good with Delhi was to see SPU NER of Delhi Police. If this could be also shifted to different parts of other bigger cities like Bangalore, Bombay, where a lot of Northeastern students and people are working in bigger cities apart from Delhi as well. So if some kind of Northeast police, regional police is set up there for the people from Northeast, I think would also really help. Lastly, I think it's important for tie-ups with, especially with sporting bodies like the Federation, Football Federation, BCCI, and including Bollywood, to include Northeastern as well, so that I think this is how it can reach out, and it can also get people from different parts of the country involved and bring awareness to it. So lastly, I would like to thank National Commission for Women for inviting me here, and I would like to congratulate NCW for organizing such a wonderful event and bringing awareness. And I hope the work I think NCW has been doing has been fantastic so far, and I hope you continue doing some great work for people across India, especially when it comes to racial discrimination against women or men. So thank you for having me. Thank you. Thank you, Mr. Baichung Bhutia. I think you have given some food for thoughts when you talk about how sports integrate diversity, and it also brings in the uniqueness of your own experiences. And I think your contribution to sports has also bring in awareness of from where you come from, and that also brought in the Northeast closer to a lot of dialogues. Now, if you're looking at your suggestion of lack of awareness, I think the awareness level has increased, and also your suggestion about tourism. I think people-to-people connectivity in the states is always one way of bringing diversity, much more educative at a level of tourism, at a level of dialogue, a level of connecting, because they say food is a conversation in tourism. That's how people get into that diversity.
Thank you for those food for thoughts. And also that you suggested that I think the special unit should be there in different states of the country. I think that is an important part because India is huge, it's big, it's diverse, and we're having more and more growing younger population migrating for education, migrating for jobs and employment. So with that, I will move now to Ma'am Ajajoy Numai, the Professor of Sociology and Head Center for Study of Social Exclusion, Inclusive Policy, University of Hyderabad. She is a Professor of Sociology and Head Center for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy at the University of Hyderabad. She served as the Assistant Professor, Department of Sociology from the year 2000 to 2009. She's one of those pioneers in establishing the Women's Studies in the University of Hyderabad in 2007. Currently, she's also the member, Managing Committee of the Indian Sociological Society. I think I've known ma'am for a long time now with the research that she really went in depth to really look at another aspect of, the situation of human trafficking. And with that, my question to you, ma'am, is, as a person who took an in-depth, deep dive research, did you find any situation by which racial diversity is a push factor to human trafficking? Because that is also an issue that our country is addressing at different level. And I think most of the panelists sitting here and many of the participants who are from the law enforcement too are addressing that issue. But I think racial diversity is also one complexity. So if you could throw some light from your research to the audience. Thank you. Good afternoon and namaskar. I just would like to thank NCW for inviting me, and thank you, Hasina, for this very important question. I find that the neoliberal culture, the neoliberal economic culture provides an idea that actually human trafficking is a pathway for social mobility. This neoliberal economic culture have kind of provided a space to believe that human trafficking, it attracts actually like a soft power, that it will lead to mobility, it will lead to not only metropolitan cities, but also to other foreign countries. And secondly, there is a kind of cross-border trafficking, especially in the context of Northeast India. I found in my research that it is not only the women of Northeast, but women from Bihar, UP, women from Nepal are also trafficked from the Northeast to international border, and from there towards many other countries like Southeast Asia, the Middle East, and also to other parts of West Asia. So I find that there is a kind of diversity in terms of women who are pushed into the trafficking, because as I said, the neoliberal economic culture has paved a way for this idea that pushes them to have a kind of social mobility. I also want to mention not only on trafficking, but women from Northeast are easy prey, considered as an easy prey. And another thing that I want to mention is how the racial approach actually towards the people of Northeast stems from ignorance, as the first speaker, Sonam Wangchuk, have mentioned. And the Northeast Indian distinct cultures are seen as a threat to the culture of mainland people, which has led to the othering of people of Northeast. Now, as a result, many racial incidents have happened, which quite unfortunate, and we feel upset, as Baichung Bhutia also just mentioned, although things are very much improved now. Now, during the first wave of COVID and the second wave of COVID, around 40,000 Indian diaspora with H-1B visa lost their job in the United States. And they face racism. So it's not only the people in India that face racism, but Indians who goes abroad also face racism.
I was reminded of how the diaspora in the United States have staged a protest, a massive protest during the first wave and second wave of COVID-19 against the then Trump government and some of the Caucasians who meted out racism towards them. And I remember this heartbreaking story of a single mother who have to leave behind her newborn infant in the United States, and she has to come to India because her daughter is a US citizen. And as we reflect the trajectory of racism in India, it is not only the Mongoloid people who are from Ladakh or from Northeast or other parts of sub-Himalayan region who face or encounter racial discrimination, but the Dravidians from South India also face racism very much here within our own country. The issue of exclusion and hyphenated identities are also rampant within caste endogamous and hierarchical mainstream Indian society. For example, during the 1960s and the 1970s, the South Indians were labeled as Madrasis, particularly here in North India. There was a conflict between the people of North and South over the issue of recognizing Hindi as a national language. Perhaps the emergence of former Prime Minister late P.V. Narasimha Rao as a prominent leader in the 90s, and also Devagowda from Karnataka as a prime minister reveals, that all the South Indians cannot be categorized as Madrasis. So people realize that, we live in this country where, we cannot afford to label certain group in one homogeneous category. And, we are here to raise rigorous sensitization of different cultures and racial groups in our nation and learn to respect each other. Now, when we talk of the South Indians and the North Indians, we have overcome, India as a nation has overcome the problem of labeling the South Indians, uniformly as Madrasis. Secondly, I would like to mention that the ideology of inclusion is of recent origin. The discourse on inclusion is incomplete without examining some exclusion characteristics, because both are prevalent everywhere and exist simultaneously. But how it operates and how it varies depends upon the nature of the society. So the question arises how social inclusion and exclusion phenomenon influence social cohesion. The problem in the Indian social system began with the tussle between insiders and outsiders. In other words, the traditional perspective of we versus them or they is a reality which we cannot, just shy away. In other words, we are moral and they are immoral. Using the idea of German sociologist Emil Durkheim, the notion of we signifies sacred and they represent profane. Finally, there is also a new trend, especially among the tribes from the Northeast, where there is a kind of equality-based society that is emerging. There is a kind of class-based hierarchy that is emerging from an egalitarian society. And in the process, social dynamics change, with individual identity against socio-cultural identity. We recognize ourselves as part of some group, and identity was about a group rather than an individual. We have groups, not individuals, because Indians are always a part of some group, and our identity has been confined as some group, not as an individual. Therefore, the movement from equality to hierarchy occurs when the tension of group identity and individual exists in the conflict. So considering this background, we need to recognize the persistence of a plural society and a multicultural society. Now, when we talk of inclusion and diversity, it does not mean giving few scholarships and also welfare schemes to the excluded people, but going beyond and deep
into the very nature of the society. And I really like the way NCW chairperson Dr. Rekha mentioned how there should be exchange of students, youngsters between states, between different groups in India. And that can happen if we go beyond and deep into the very nature of the society. It has to be done by living and imbibing the culture of the excluded people to make them included in the mainstream society. So the difference between the Aryan, the Dravidian, or the Mongoloid racial group from the Northeast, cannot be just dismissed, cannot be wished away. But we all have the mainstream Indians as well as the people of Northeast have to accept each other and celebrate the differences by upholding the spirit of multiculturalism and also unity in diversity. I would like to draw my own personal experiences of highlighting diversity and inclusion. To me, making the personal a part of our larger professional, academic, and activist lives is logical and relevant for bringing a kind of, or for bridging the gap between us and others. Us as in people of the Mongoloid race, and others, the Dravidians and the Aryans, As Dr. Rekha mentioned about her family, I also would like to mention about my own family, that I'm married to a Telugu. My father-in-law is from Visakhapatnam, an Air Force captain. My mother-in-law is from Cuttack, Odisha. And I live in a multicultural family. So I say this is a mini reflection of unity in diversity. And it is possible for all of us to live with, to practice, and observe this unity in diversity. So thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, ma'am. I think that opening, when you live in a home with diversity, you become much more observant and inclusive. And I think with that kind of education, if we filter into the education system and bring in more of an awareness building, we bring that inclusivity of how we can really address racial diversity in a country like India, which is so huge. If today we can adopt a clothing of another state because it's beautiful, then why can't we adopt the diversity of the differences? So I think sometimes the clothes we wear or the food we eat, it's a choice that we make because we embraces the diversity. So if we can embrace the diversity through our food and through the clothes that we wear, I'm sure the education can help us to be more adaptable and respectful to the differences that we are living in. Thank you so much for that. Now, with that, I will go now to Ma'am Rinchen Lamho, the member from Ladakh National Commission for Minorities. I think this commission is a very important commission that was set, I think, as a progressive India, to really look at differences and how one can really tackle that through the different convergence. I see this meeting today as a convergence of three, departments and ministries and things coming together in addressing a very crucial issue. She is basically the foremost woman leader from Ladakh and current a member of the National Commission of Minorities. Ma'am will definitely address in the national language. I'm not very good with Hindi, but I think that's what diversity is. We understand. I can ask in English and she'll answer more in depth from her heart in Hindi. And the question is, being in the heart of a ministry that has responsibility to dive deep of minority diversity, what ways has been adopted so far to address racial diversity, ma'am? नमस्कार सबको. सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम आयोजन करने के लिए मैं NCW और बाकी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बोलना चाहूँगी कि आज के युग में सचमुच इस तरह के कार्यक्रम की सख्त ज़रूरत है ताकि भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जगह में रहने वाले लोगों को भी लगे कि हाँ हमारे लिए भी कोई सोचते हैं, भारत हमें चाहते हैं
और हम अलग नहीं हैं, ऐसा महसूस कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमीशन के तरफ से हमेशा सबसे पहले तो लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि जहाँ भी भारत के हर कोने में लोगों में ये जागरूकता लाए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफिकल्टीज हो, कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यक के साथ अगर कोई बुरा बर्ताव हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो कमीशन आपके साथ है। क्योंकि लद्दाख जैसे इलाके से ज़्यादातर एजुकेशनल माइग्रेशन हो के बच्चों को भारत के कोने कोने में पढ़ाई के लिए रहना पड़ता है। उसी तरीके से कमाई के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। तो खासकर जो स्टूडेंट्स को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, जैसे क्योंकि लद्दाख में अभी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, तो कॉलेजेस नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थे। तो अभी हम शुक्रगुजार हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से अलग होने पर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अभी हम तरक्की के राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी लद्दाख में भी कॉलेजेस खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, जिसके लिए हम मोदी सरकार को तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि लद्दाख यूटी बनने से पहले वहाँ पे कुछ 1, 2, 3 ही हमारे पास डिग्री कॉलेज थे, सिर्फ कोई यूनिवर्सिटी नहीं थे, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं थे, कोई भी जो हायर स्टडीज़ के लिए बच्चों को अगर पढ़ना है तो बाहर जाना ही जाना है। बाहर जाने के बाद अपने माँ बाप से दूर रह के किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं, अपने घर से बहुत दूर 400, 500, 600 किलोमीटर दूर रह के एजुकेशन लेने के लिए हम रहते हैं। तो बच्चों को जो है ये रेशल के कारण बहुत सारे कमेंट्स बच्चों को सुनना पड़ता है। मैं खुद भी ले से बाहर जम्मू में मैंने ग्रेजुएशन किया, तो काफ़ी साल पुराना है, लेकिन आज भी तब भी हम सुनते थे, आज भी हमारे बच्चे इस चीज़ को काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लद्दाख में जो है, लद्दाख के लोग जो है देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। हमारे हर घर कोई भी फैमिली ऐसा नहीं है जहाँ पे फौजी नहीं हो, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। और लद्दाख में जब भी भारत के साथ, चाहे चीन के साथ युद्ध हुए हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं, लद्दाख के लोग चाहे फौजी हो चाहे बिना फौजी के लोग हो, आम लोग भी बिना वर्दी और बिना तनख्वाह के फौजी के समान है वहाँ के लोग। और हमेशा देश के लिए जब भी युद्ध होते हैं, ऐसे परिस्थिति में वहाँ के महिलाएं अपने घरों में रहकर फौजी लोगों के लिए हाई एल्टीट्यूड फूड तैयार करते हैं। वॉलेंटियरली हमारे यूथ जो है उनको वहाँ के जो सरहदों पर पहुँचाते हैं। हम सब तरीके से हम अपने जो है कोशिश करते हैं, फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम अपने देश के सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन अपने ही देश में जब हम लद्दाख से बाहर आते हैं, अपने ही देश में हमें हिंदुस्तानी होने का हमें सबूत देना पड़ता है। आप चाइनीज हो, आप कहाँ के हो, आप चाइना हो, जैसे कोरोना के टाइम पे भी ये कोरोना आ रहे हैं, हमें कोरोना के नाम से पुकारते हैं, कोरोना आ रहे हैं। हम जैसे लोगों को देखकर 2 कदम पीछे हटते हैं, कोरोना कोरोना ऐसे पीछे से छेड़ते हैं, तो बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बीच में ही अपने स्टडीज छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। कुछ बोर्ड होते हैं, वो चलो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं। कुछ बहुत सेंसिटिव होते हैं, फिर घर में मम्मी को फोन करते हैं, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा। तो इस तरीके से ड्रॉप आउट भी काफी होते हैं। तो हम गुजारिश करते हैं
आम मेन स्ट्रीम के लोगों से। हम भारत के जो है सरहद पे रहने वाले लोग हैं, तो हमें आप भारतीय होने के जो है बार बार हमें भारतीय होने के वो ना आप करें, भारतीय होने के प्रमाण हमें बार बार ना देना पड़े। तो पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसे बच्चों के जो कंप्लेंट आते हैं उनको फटाफट उस पे एक्शन हो। तो नहीं तो क्योंकि ऑलरेडी ऐसे एरिया में रहने वाले लोग बहुत ही शाय नेचर के होते हैं, हम खुले हुए नहीं होते हैं, यहाँ जो प्लेन में रहने वालों के तरह नहीं होते हैं। बड़ी मुश्किल से एक दो लोग हिम्मत करके अगर पुलिस के पास जाते हैं, अगर उनको उसी समय अगर सहयोग मिल जाते हैं तो बाकी लोग भी आहिस्ते आहिस्ते ऐसे हिम्मत जुटा पाएंगे। अगर सहयोग नहीं मिलते हैं तो वो एग्जाम्पल लेकर फिर पीछे ही हटते रहेंगे, ये चीज हमेशा आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी तो काफी चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अभी मैं कमीशन में आने के बाद एक केस आया था हमारे कुछ स्टूडेंट्स को पंजाब में, वहाँ जो रेंट पे रहते थे वहाँ पे काफी कहासुनी हो गए थे। तो मैं पंजाब पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगी, वहाँ उन्होंने उसी समय एक्शन लेकर नेक्स्ट डे ही वो सब कुछ कंप्रोमाइज होकर वहाँ उनको समझाकर पूरा एपोलोजाइज कराकर सब सॉर्ट आउट हो गए। अगर इस तरीके से प्रॉम्प्ट एक्शन हो तो वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत सहूलियत होंगे। तो बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से अल्पसंख्यक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स बने हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं। तो उन सारे योजनाओं का जो फायदा लेते हुए हम एजुकेशन लेते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, साथ ही साथ हमें इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें भी भारत के जन होने का जो है प्रमाण बार बार ना देना पड़े। तो ज़्यादा ना बोलूँगी, इन्हीं विषयों के साथ मैं आप सबसे धन्यवाद बोलना चाहूँगी। जय भारत। Thank you, Madam Rinchan. I think she rightly pointed out the education migration. I think whether it's from the northeast or it's from the Ladakh, has continued to take place. And I think migration is a right when we people looking for better pasture, better, progress. But she also highlighted something very interesting: technology. How technology, the 4G, has reached a nook and corner of this country. So if we look at from that positive angle, how technology can really address diversity, especially a commission like hers, and I think that was set specially for this. And also what the other speaker has really mentioned is awareness, creating that awareness, creating that kind of bridge. So I think the technology is one angle that one can also dive deep, to see how we can connect and address this issue. With that, I would like to now call upon a very important person, Mr. Hibu Tamang, because being the Joint Commissioner of Police, Special Police for Northeast Region, that was set up because of a situation of racial diversity, crime, and that has taken place in our capital. Let me introduce, he is the Nodal Officer for the Northeast Police in Delhi. The Delhi Police Special Police Unit for Northeastern Region, in short is called SPANA, and the Delhi Police has been providing a lot of landmark services and support to the people from the Northeast region, residing in the national capital. This special branch of police is an innovative initiative which has also signified the sensitivity and responsiveness of the government of India toward the most critical issue of Northeast people in the national capital. Now, I know that this unit was set to look into the different racial crime that has happened in our country. And I think what Mr. Baichung Bhutia was mentioned, this is a need in every capital that has to be there. And I also would like to take in the diversity that Ma'am Ajay had said, that it can be more inclusive. My question to you is, as you're heading a unit that has evolved to address and bridge racial diversity of Northeast, people challenges in the capital, what have been your experience and what do you think would be the way forward? Taking the other few speakers' inputs that they've also put it in. Thank you, ma'am.
I also take this opportunity to speak in Hindi. यहाँ दिल्ली के वासियां हैं, RWS लोग भी आए हुए हैं. बहुत अच्छा लगा सर, विज्ञान भवन भर गया है. तो मैं थोड़ा सा अपना राष्ट्रभाषा में बात करना चाहता हूँ, हिंदी. मैं दिल्ली पुलिस स्पूनर के बारे में बोलने से पहले एक दो शब्द ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों में से किसी ने सुना है अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल क्या चीज होता है? अरुणाचल जो है ये अरुण आंचल, ये संस्कृति ओड है. ये कोई शास्त्री ने हमारा अरुणाचल में आके उत्तर प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश नाम देके गया है. उसके बाद मैं एक अरुणाचल से छोटा सा गांव होंग बस्ती 0 लोअर सुबनसिरी अरुणाचल से इंडियन पुलिस सर्विस में आके मुझे मौका मिला दिल्ली पुलिस में सर्विस करने का. तो मैं अरुणाचल से में आप लोगों ने नाम देके गया और यहाँ आके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बार बार कि हम अरुणाचल से आए हैं, हम इंडियन हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं. आप जानना नहीं चाहता है. मैं आपका भाषा सीख लिया है, हिंदी. मेरा हिंदी बहुत खराब है, फिर भी थोड़ा कुछ सीख लिया है, ताकि ये मेरा क्षेत्रीय भाषा नहीं है. आपको मालूम हो अरुणाचल में 26 जनजाति ट्राइब है, 100% ट्राइबल एरिया है. वहाँ मोर देन 100 ट्राइब्स जो 100 डायलेक्ट्स कहा बोला जाता है. अलग अलग लैंग्वेज है अरुणाचल में. और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में मोर देन 250 एथनिक ग्रुप है. बहुत भाषाएं हैं, लेकिन अरुणाचल में हम रहते हुए अपना अरुणाचली का भाषा समझता नहीं, तो इसलिए हम हिंदी में वापस आपस में बात करते हैं. जब हम आईएनए मार्केट में सब्जियां खरीदने जाते हैं, अरुणाचल का दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जो लोग मिलते हैं, हम आपस में हिंदी बात करते हैं, तो यहाँ का लोग हमें देख के हंसते हैं. ये चाइना से आके क्या यहाँ दोनों आपस में हिंदी बात कर रहे हैं? हमें सुना रहा है, हमें हिंदी सुना रहे हो क्या? आपका सोच विचार वहां से शुरू होता है. आप क्यों जानना चाहता है कि हमारा देश में कितना राज्य है, कितना लोग है? हम आपका यहाँ दिल्ली में आके क्यों बताऊं? आप जानना चाहिए कि आपको क्यों मैं बताऊं, क्यों एहसास दिलाऊं कि मैं भी भारतीय है. आपको मालूम होना चाहिए, आप दिल्ली में हैं, नेशनल कैपिटल में हैं, देश का राजधानी है. देश का राजधानी का लोगों का नॉलेज ज्यादा हमसे होना चाहिए. मैं लास्ट 5 साल से दिल्ली पुलिस स्पूनर यूनिट, हमारा बालाजी सर बैठा हुआ है, काफी स्टेप लिया गया है दिल्ली पुलिस ने कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का समस्या को दूर करने का. और उसी तरह हमारा जो गोरखा भाई बहन है, जो दार्जिलिंग से आते हैं, जो लद्दाख से आते हैं, हम सकल एक दूसरे से मिलते हैं तो सभी हमको नेपाली बोलते हैं. हम नेपाल का नहीं है, हम इंडियन है. लेकिन यहाँ नेपाली भाषा भी है. आपको मालूम है राष्ट्रभाषा एक नेपाली भी है. आपका नेशनल लैंग्वेज 22 में से नेपाली को भी आपने रिकॉग्नाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशनली. लेकिन आप क्यों नहीं मानते? ये क्या गलत अलग आदमी है क्या?
तो उसी तरह हमें चिंकी बोलता है। चिंकी का मतलब चाइनीज लोगों को बोलते हैं। ऐसे अभी डिरोगेटरी नहीं है, और पर से नॉट ए डिरोगेटरी, लेकिन आप जिस नजरिए से जिस मानसिकता से आप पुकारते हैं तो ये डिरोगेटरी हो जाता है। तो चिंकी बुलाते हैं, आप मोमो बुलाते हैं। मोमो भी एक खाने का चीज होता है, बहुत बढ़िया है, स्वादिष्ट है। मैम खाया होगा, मैं रेखा मैम तो खूब खाया होगा मोमो, क्योंकि वो आर्मी में थी। तो ये खाने का चीज है, लेकिन इस तरह आप बोल के झगड़ा शुरुआत कराते थे। और हमारा लोग यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में एक सोमोटो केस लेकर के कहा है कि ये हम भेदभाव क्यों, नस्लीय भेदभाव बोलता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इसका बीमार क्या है, इसको बीमार को दूर करना, बीमार को फाइंड आउट करो तब दूर किया जा सकता है। जब तक बीमार को फाइंड आउट नहीं करेगा दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए एक कमेटी गठन करने का भारत सरकार को आदेश दिया गया है। भारत सरकार ने एक कमेटी गठन किया है, उसको बोलते हैं एमपी वेजबोरुआ कमेटी। एमपी वेजबोरुआ कमेटी में बहुत लोग शामिल हैं। हमारा प्रीवियस नोडल अफसर रॉबिन हिबू भी उसमें थे। तो काफी इन डेप्थ स्टडी भी किया है, बहुत स्टेप्स लिया गया है नोटिस का लोगों का समस्या क्या है फाइंड आउट किया है। उसमें नॉर्थ ईस्ट का लोगों का जो माइग्रेंट हुआ है, माइग्रेशन मेट्रो सिटी और दिल्ली जैसे जगहों में महानागरिकों में 86% वो फील करता है कि हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनते हैं। और जो माइग्रेट होके आते दिल्ली का संख्या लगभग 2-3 लाख पहुंच चुका था। तो उनको 85% स्टूडेंट्स है स्टडी के लिए आता है, और 15% जो है नौकरी ढूंढने के लिए आता है यहाँ दिल्ली में। जैसे ही वो दिल्ली में पहुंचता है, जैसे ट्रेन स्टेशन से निकलते हैं, जैसे एयरपोर्ट से निकलते हैं, वहां से उस नॉर्थ ईस्ट लोगों का समस्या शुरू हो जाता है। टैक्सी वालों से, ऑटो वालों से, और भाषाएं हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का जो लैंग्वेज है, मैं हिंदी जो बोलता है अभी मैं धीरे से बोल रहा हूं, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं, बहुत स्पीड में हम बात करते हैं, तो यहाँ का लोग मेरा हिंदी को समझ में नहीं आता, तो बोलते ये कौन सा भाषा है, पूछता है मुझे। तो ये टैक्सी वालों से बोलते मुझे आने जाना है, तो उसको समझ में नहीं आता, तो स्पीड में बोल देता है। तो इस तरह वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है, और प्रॉब्लम जब शुरू होता है आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट शुरू होता है तो यहाँ का टैक्सी वालों, ऑटो वाले, दुकानदार वाले, आप RWA वाले स्मार्ट है क्योंकि आप दिल्ली वाले हैं, आपको पता है क्या करना है, तो 100 डायल कर देगा। जबकि आपने गलती किया है, 100 डायल करके आप कंप्लेनेंट बन जाता है, तब नॉर्थ ईस्ट वालों को एक्यूज बना देते हैं, जबकि वो विक्टिम है। तो एक्यूज बिकम विक्टिम, विक्टिम बिकम एक्यूज, और पुलिस आते हैं 100 वाले डायल जब करते हैं, तो पुलिस आके नॉर्थ ईस्ट लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, तुमने व्यवहार अच्छा नहीं किया। व्यवहार उसका लैंग्वेज का वजह से शुरू हुआ था। तो यहाँ का जो भी मेरा 5 साल का तजुर्बा है जो दिल्ली पुलिस स्पूना यूनिट को हैंडल करने का एज ए नोडल ऑफिसर, तो मैंने देखा कि जो समस्या जो मैडम जो लद्दाख से आके बताया कि जो समस्या हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, गोरखा भाइयों लोगों के लिए जो लद्दाखी से जो दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो प्रॉब्लम
दिल्ली पुलिस के लिए या आपके बाकी स्टेक होल्डर्स जैसा सर्विस सेक्टर से जो नौकरी देने वाले उनके लिए छोटा मोटा प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके लिए छोटा है प्रॉब्लम, लेकिन हमारे लिए बड़ा है। और जब वो थाना में पुलिस स्टेशन में बच्चा को ले जाता है बिकॉज ऑफ सम अल्टरकेशन, थोड़ा सा आर्गुमेंट का वजह से पुलिस स्टेशन में ले जाता है। आजकल का मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी जमाना है, आप वाईफाई कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो घर में बताते हैं कि मैं घर में थाना में हूँ, तो वहाँ बैठ के 2000 किलोमीटर, यहाँ से गुवाहाटी 2000 किलोमीटर है, वहाँ से हम और आगे जाना पड़ता है। यहाँ से इस्लामाबाद 700 किलोमीटर है, काबुल 900 किलोमीटर है, लेकिन हमारा यहाँ दिल्ली से गुवाहाटी 2000 किलोमीटर है। बहुत दूर दरार में रह करके जब बच्चे थाना में जाते हैं, माँ बाप चैन से नहीं सो सकता। इसलिए लोगों को लगता है कि दिल्ली में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। जब मैंने अपना बच्ची को दिल्ली में एडमिशन के लिए लाया, DU में एडमिशन मिला था मेरा बेटी, तो मेरा मिसेस ने फोन किया, यू विल नॉट एडमिट हर इन दिल्ली, तुम एडमिशन नहीं दोगे, साउथ इंडिया में ले जाओ, वहां लोग अच्छे हैं। तो साउथ इंडिया में मेरे अपना वाइफ से मैं आर्गू नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना बच्ची को विड्रॉ कर दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल के बेंगलोर में ले गया, वहां एडमिट करा दिया और मिसेस को खुश कर दिया। क्योंकि उनको टेंशन होता है, बोलता है कि दिल्ली में रहने से लोग बच्चे सेफ नहीं है, यहाँ के लोग इल ट्रीट करता है। जैसा मैडम ने बोला, कोरोना बुलाता है, चिंकी बुलाते हैं, ये खाता है, वो खाता है, इसलिए दूर रहे। मतलब जो मानसिकता, मैं दूर से आप बोलते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, तो लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग, सर जानता है बालाजी सर, इन्होंने मिजोरम में सर्व किया है। तो नॉर्थ ईस्ट लोग जो वहाँ हमारा परंपरा, हमारा जो कल्चर, मेहमानों को लड़की लोग स्माइलिंग करके स्वागत करती है। स्माइलिंग देना मीन्स रेस्पेक्ट, और यहाँ स्माइलिंग देख, अच्छा मुझे देख के हंसती है। हाँ? तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आके यहाँ का समाज से एडजस्ट होने में समय लगता है, तब तक बहुत कुछ सारा चीज होता है। फिर बाद में कॉलेज से निकल के अधूरा पढ़ाई छोड़ के भी बहुत जाने वाले हैं। तो ये लोग दूर से नजरिया से देखता है कि इसको रूम रेंट देना नहीं है, ये गलत लोग है। इस तरह का सोच विचार को हम उसको बोलते हैं मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जब तक आप मानसिकता को नहीं बदलोगे, हम चाहे जितना भी प्रोग्राम करें, आज मैम रेखा मैम ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, सारा प्लीनरी हॉल भर गए हैं। इसी तरह का हम प्रोग्राम दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट रीजन स्पूनर यूनिट बहुत करते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस बोलता है, लास्ट लॉकडाउन में 3 केस रजिस्टर हुआ जो हमारा लोगों को कोरोना बुलाया था। क्योंकि कोरोना चाइना से आया और हम शक्ल से चाइनीज लगता है, तो इसलिए बुलाने पर हमने केस रजिस्टर करवाया है। लेकिन यहाँ के लोग, हाँ क्राइम है, जहाँ ह्यूमन बीइंग है वहाँ क्राइम होता है, लेकिन क्राइम दिल्ली पुलिस ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एडॉप्ट किया है। इसलिए स्पेशल पुलिस यूनिट स्थापित किया है, सेटअप किया है, वो बहुत अच्छे काम कर रहा है। 1093 हेल्पलाइन है, 24 घंटा हम निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट DCPs को नोडल ऑफिसर बनाया गया है।
MHA मॉनिटरिंग कमेटी है, मॉनिटर कर रहे हैं। ये मेरा लास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कोरोना का समय में 3 केस रजिस्टर हुआ कोरोना बुलाने पर, लेकिन मेरा 5 इयर्स एक्सपीरियंस बोलता है आजकल नॉर्थ ईस्ट लोगों को चिंकी नहीं बुलाते हैं, मोमो नहीं बुलाते, लोग तो सतर्क हो गया, अवेयर हो गया, और होने भी चाहिए। भारत सरकार ने आपको स्पेशल पैकेज दे रखा है कि नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान में, लद्दाख में, कश्मीर में घूमिए, स्पेशल लीव कंसेशन लेकर के, LTC लेकर के आप जाइए, घूमिए, देखिए क्या लोग है वहां। सिर्फ आप खान पीन कान से सुन के आप जजमेंट मत दीजिए, देखिए। तो ये हमारा बदलना बहुत जरूरी है। हमने 178 पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस स्पूनर टीम जाके अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कराया है। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमने ट्रेनिंग दिलवाया है। भवनों से हम टच रखते हैं, जितना भी यहाँ प्रॉब्लम समस्या होता है, हम दिल्ली पुलिस स्पूनर टीम 24 घंटा काम करते हैं। हम हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर रखा है जहाँ जहाँ नॉर्थ ईस्ट लोग रहते हैं, जैसे इसमें हम पेट्रोलिंग देते हैं, स्पेशल पुलिस यूनिट का निट पेट्रोलिंग हम मदद करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज भी देते हैं। और यहाँ हमारा लियाजन का वजह से 48 हॉस्पिटल्स ने नॉर्थ ईस्ट लोगों को कंसेशन भी दे रहा है, ट्रीटमेंट कंसेशन। हमारा DPN या दिल्ली पुलिस रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है हमारा नॉर्थ ईस्ट लोगों को, जो हिंदी और अंग्रेजी आते हैं, और एडवोकेट को एनपैनल किया गया है। इस तरह हम काफी स्टेप्स लिया है, मेजर्स लिया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और MP वेजबोरा कमेटी का रिकमेंडेशन सारे मिनिस्ट्रीज को, इंक्लूडिंग मीडिया सेंसिटाइजेशन, मीडिया लोगों को भी यहाँ बैठ के आप मीडिया आप बाइट देने से पहले आप भी जाइए, देखिए, अरुणाचल में जाइए, नागालैंड में जाइए, तब आप मीडिया रिपोर्ट दीजिए ग्राउंड में जाके। यहाँ बैठ के आप रिपोर्ट देगा, वो हियर से रिपोर्ट है, उसमें मैंने काफी मीडिया बाइट सुना हूँ, तो बहुत वहाँ का ट्राइब का नाम आप नहीं बोल पाते, दूसरा ट्राइब का नाम मेंशन कर देता है जो अरुणाचल का ट्राइब है नहीं, इसी तरह आप ट्राइब का नाम मेंशन कर देता है। तो इसलिए मीडिया प्लेस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, सारा देश को बताइए, देश का सारा वासियों, दिल्ली वालों को बताइए कि ये नॉर्थ ईस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट अंक राइट हैंड है। राइट हैंड मैप इतना सुंदर है, हमारा भारत का देश। मैम ने कहा है, हमारा चेयरपर्सन मैम का, भारत कितना सुंदर है, कितना सुंदर प्रकृति है, एक सुंदर बगीचा है, डाइवर्सिटी, जो हमारा फूल जैसा बोके बनता है, गार्लैंड पेटल्स बनता है। एक फूल, एक रंग का फूल सुंदर नहीं दिख सकता, तो हमारा अनेक रंग है, तो इस अनेकों में एकता है। हम बहुत पैट्रियोटिक है अरुणाचली, ले आप कितना पैट्रियोटिक है दिल्ली वासी, मैं वो सवाल करना, खुद को सवाल कीजिए। आप देश का बारे में जानना है। और मेरा ये जो कहना है कि MP वेजबोरा कमिटी रिकमेंडेशन इज ए वेरी एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन, ये सभी मिनिस्ट्री के लिए दिया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तब हमारा समस्या और नेशनल इंटीग्रेशन बनी रहेगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Hibu. I think he's given us some beautiful insight. One insight, I think, is about momos, right? Every nook and corner, every street food in India today, people have learned to enjoy momos, to eat, and that's food. Can we make that as a conversation to address the diversity of our country? If we are eating, why can't we talk from where it's originated? So I think that's a very good insight. It's a food for thought. Thank you for that. The other is the awareness. I think we had 3 of our panelists who also talk about technology as a bridge and a gap, and also tourism, So I think tourism and technology is an important part of a way forward of this seminar.
to see how dissemination can be taken it to the next level. With that, I really want to bring a young voice from this panel right now. I think we've had many of us who's very experienced, with diverse experience. Let me call upon Pooja Elambam, who is from the Indian Administrative Service, a young aspiring civil servant who is from Manipur. I think as a young person sitting in this panel, with all the diverse, inputs of everybody, how do you see, yourself as a young aspiring person, looking at diversity at this moment, and what do you think is the way forward? Namaskar. Good afternoon. I thank National Commission for Women for inviting me to speak on this very relevant issue. Starting off with my personal experience, I was 11 years old when I went to boarding school in North India. And I still remember my first day there. I was scared and I was surrounded by a group of young kids. And they were asking me, which country are you from? And, are you a princess of that country? So I had to explain to them that I was from Manipur. So that was one instance in which I realized I was different and I was perceived as different when I moved out of the Northeast. Another is when I went to St. Stephen's College for my college, and I was 18 years old then, and I also encountered a lot of people on the streets calling me Chinky, Chinese, and even when I performed well in my classes, when I topped my classes, even the professors were surprised that how can a person from the Northeast do so well? So that kind of subtle, awestruck that how can a person perform so well, that kind of incidents I faced. Another one is just yesterday, I was having dinner with my friends, and it was 8 o'clock, and my mother called me up, and I am an IAS officer now. I just finished conducting the state legislative assembly elections in Manipur as a returning officer. I'm 28 years old, and still my mother is calling me at 8 p.m. and telling me, are you sure you are safe in Delhi out at night? So even now, I still face this, and I'm sure so many of us, especially the students and young people gathered here today, have faced similar situation. And so, I just want everyone to understand that race is a social construct, just the way gender is a social construct. And racialization is a process by which, this race is brought into existence through signifiers such as the color of our skin, our features, and sometimes by our cultural markers. And the predominant idea of race which we have now came into being in the 18th and 19th century during the period of imperialism and colonization. So, for example, in India, we have the British coming up with the idea of the so-called martial races. Especially after the revolt of 1857, because they wanted to make certain groups more loyal to them. So that is how they came up with these ideas. So it is something which has continued till now, and I think we need to really address it, and I think this is a really important forum for everyone to come together, people from different organizations and departments, and all the students gathered here today. I think education is one of the foremost areas where we can actually change this. My nephew Maverick, he was telling me about how in his school, in his class, they are allotted a state, and throughout the course of the year, they learn various aspects of the state of our country. So they learn about the cuisines, they learn about the biodiversity, they learn about religion and culture. So through the course of a year, they become so intimate with that state, and they learn so much about it that I think that will last for a lifetime, that kind of understanding. And maybe when they grow up, they will actually travel to that state, or they will travel to that state with their families. And like Mrs. Rekha Sharma has suggested, actually even have exchanges as part of our curriculum. So if our education system and our curriculum reflects the diversity that is India, I think to instill that kind of sensitization from an early age is very important.
I also think that literature is how we connect, stories is how we connect to each other. And instead of just hitting with cold hard facts, if we incorporate literature of different parts of the country in our syllabus. For example, we read a lot of American and English authors in our syllabus while growing up. So, I remember asking my mother to give me marshmallows and scones, and my mom, told me that this does not exist in our country, but just because I read about it in our books, I always wanted to eat those items. So, if we actually incorporate these stories, a person growing up in Kerala, if they read about, Lai Harauba or about Iromba of the north, of Manipur, or a person in Punjab, reading about, the Ladakh and, Nagaland. If we can understand this from an early age, I think it will bring us all much closer to each other. So I think education is very important in this factor. Another aspect, I think, is representation. Representation in screens, in cinemas, in media, in politics, in administration. So, as a young person growing up, I saw, Sir Robin Hibu working with the Northeast people, actually addressing the issues faced by people of the Northeast. So it was very heartening to me. And I also wanted to be in a position where I can help other people. So, and here I am. So I felt that, representation on screens, taking the example of the US, the phenomena of the Black Panther, movie is also because there was suddenly, after a very long time, there was a black superhero, and people all over the world felt that they, relate to it, a person who looked like them. So as, that's why I think the K-wave or the Korean wave actually hit the Northeast in the early 2000s, just before it hit the rest of the world. Because, people from the Northeast could look to these people on screens and felt that they look like us and they represent, so many of our stories. So I think that's why people really love the Korean dramas and Korean movies. And I think we need to have a lot more representation in our cinemas, in our, media from the Northeast as well, because the more we see, through social media or through media, that's when they become familiar to us and we become familiar, to other parts of the country. So I think that is also another aspect in which we can look at. Another, I think, is also in terms of, recruitment, even in government services and even in corporate jobs. We need to have much more diversity, and we need to have this diversity criteria and standards in hiring and recruiting people. This is prevalent in, I think, almost all the developed countries where they actually include this while hiring people. So I think it's very important because in a study done in the US, it was found that when black and white people with the same qualifications, when they applied for a job, the whites got a much higher callback. I don't know if a similar study has been done in India yet, but I feel that it's quite likely that people with mainstream looks and mainstream names with the same qualification as people, say from the Northeast, I think the mainstream person, looking person, or with the mainstream name is likely to get a call back. So I think these are the ways in which we can look at, we can see that now gender sensitization courses have become mainstream. I think the National Commission for Women has taken a big step in, incorporating this in many organizations and making it a, phenomena and a movement and normalizing it. So I think in the same way, we can have racial diversity sensitization courses, for many organizations, for NGOs, for the police, especially the police, because they are the interface dealing with people on the ground. So I think there's a lot which can be done, and there's a lot that we need to do. But the fact that all of us are gathered here today and we are present and we are willing to have this discourse and this conversation, I think this is the right step in making India's diversity its strength. Thank you. Jai Hind. Thank you, Pooja. Thank you for those insights. I think the power of storytelling is a strong power of bringing in the softness part of how we look at diversity, not from the context of divide, but from the context of the beauty of a story. So I think that's a very
anecdotes, I would say that education can look at storytelling and curriculum that can be evolving into a process where what you've just mentioned, those examples. The other that I think you brought in is how the world of advertisement, the world of the media, and how one, so because when we talk about media today, we have diverse media. Of course, our friend is there who will be sharing more on that. But I think if today, most of the billboard in the country has diverse faces of representation to the corporate world, that itself is an awareness of wanting to know who are they and from where they come from, because that's where the features, that is something that brings about the dialogue. I think that's a very important part. Now, with that, I really want to go to a very important person now, an important ministry in the country. Mr. Tejinder Singh Luthara, Director, National Police Mission, the BPR&D. And his department, if you're really looking at, is always look as how many crimes in the country it has, registered, how many cases it has put together. I think as a person who has been leading, that chapter, the law enforcement officer, you have 30 years of your experiences, your leadership, and the kind of criminal investigation intelligence that you've put together. You have it all at the center. And I think every researcher, every media look at that statistic. When we talk about racial discrimination, cases registered, and all the diversity. My question to you, sir, is if India is increasing with the kind of crime, but still we are still fighting on solution, how would you look at racial diversity in a country like ours and suggest a kind of a legal framework that brings a better convergence, to really address this issue? Thank you, Ms. Hasina ji. I would first of like congratulate National Commission for Women, Minority Commission, Delhi Police for conducting this beautiful program. And I'm very thankful to my Director General, BPR&D, for giving me an opportunity to be on the panel today. आज यहाँ पर दिल्ली शहर के बहुत लोग हैं और मैं भी दिल्ली वाला हूँ. इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बताई दिल्ली शहर वालों के बारे में. And he's actually given us beautiful insights about the real life in Delhi. And in this context, I would like to start my conversation with a couplet, Urdu couplet. उर्दू का शेर है, चमन में हर तरह के रंगो बू से बात बनती है. चमन कहते हैं गार्डन को, पार्क को, और रंगो बू, रंग यानी कलर और बू यानी खुशबू. चमन में हर तरह के रंगो बू से बात बनती है. तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं. रेशियल डाइवर्सिटी पर मेरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं रेशियल डाइवर्सिटी को उसकी यूनिकनेस में देखता हूं, उसकी इंडिविजुअलिटी में देखता हूं, उसकी स्पेशलिटी में देखता हूं. क्योंकि हिंदी में यूनिकनेस को कहते हैं अद्वितीय. अद्वितीय के मायने है कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है. मेरा कलर कुछ और हो सकता है, आपकी स्किन कुछ और हो सकती है, मेरा रीजन कुछ और हो सकता है, आपका रिलीजन कुछ और हो सकता है, बट हर मायने में हम सब लोग यूनिक हैं, हम अद्वितीय हैं. हमारे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है. और ये मदर नेचर ने बनाया, हमने नहीं बनाया. मदर नेचर ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम सब लोग अपने अपने आप में यूनिक हैं, इंडिविजुअल हैं, स्पेशल हैं. हमारी यूनिकनेस का जो कोलाज है वो हमारी डाइवर्सिटी है. हमारी इंडिविजुअलिटी का जो स्पेक्ट्रम है वो हमारी डाइवर्सिटी है. और हमारी स्पेशलिटीज का जो बुके है वो हमारी डाइवर्सिटी है. मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. दिल्ली वालों को फिर से मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, और वो बातें हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि इंद्रधनुष को अगर इंद्रधनुष कहलाना है तो उसको 7 रंग चाहिए. बिना 7 रंगों के इंद्रधनुष भी इंद्रधनुष नहीं है. अगर राग को राग बनना है
तो उसको सप्तक चाहिए, उसको 7 सुर चाहिए। अगर उसमें से एक भी सुर नहीं होगा तो राग बेसुरा हो जाएगा, राग राग नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, बहुत समय हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जो जीवन है वो 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और शून्य। जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है। जीवन को जीवन बनने के लिए भी 5 तत्व चाहिए, वो एक तत्व से जीवन नहीं बन सकता है। तो इसलिए हम दिल्ली वालों को सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति का जो अपने आप में यूनिक है, जो अपने आप में स्पेशल है, जो अपने आप में इंडिविजुअल है। धन्यवाद। Thank you so much, sir. I think you brought the core, you know. If we celebrate a diverse thing at the capital of our country, I think we celebrate that inclusiveness. So let's start with that motto as a way forward. Thank you for those good insights. I think crime would be reduced if we start looking at the perspective of the uniqueness that each one of us sitting here on this panel itself are all unique in our own, and we represent that unique diversity part. That's why we are here to discuss this. Now, with that, I will have our next panelist, Madam Soso Sazia, who is also the ex-member of the National Commission for Women, a prominent educationist from the state of Manipur. She has worked extensively on bringing quality education to all the people, especially the tribal women of Manipur and the youth in the district of Ukhrul since the early 1980s. Madam is the founder and advisor of the Hanpund Shanao Long, the Ukhrul Women Union Education Project. She is also the founder of the first private-run affiliated Little Angel English School in Ukhrul, which has almost 7,000 students successfully, who's completed a lot of high school. Now, you are a former member, Madam, of the National Commission for Women. My question to you is, I know you would like to put a different perspective because you've also sat as what Madam Rekha is there, you know, in the same commission that has to really embrace the kind of situation that women are facing in our country over and over again. My question is how racial diversity in Indian politics can be addressed more, because I think that's where something our panel today we did not speak. With less women representation, how can we really bring that, you know, in terms of diversity? Thank you, Hasina. Honorable Chairperson NCW, Ma'am Rekha Sharma, and all the staffs of National Commission for Women, National Commission for Minorities, Associating Chairperson, Director of Bureau of Police Research and Development, and Joint Commissioner, Special Police Unit of Northeast Region of Delhi. Thank you for inviting me for this auspicious occasion, and I also have a warm welcome to all our co-panelists and all the persons who had gathered here in this seminar. The questions Hasina has given to me is, see, democracy involves popular control over decision-making and equality between citizens in the exercise of that control. Popular control over decision-making is achieved through inclusive political participation and representation in democratic institutions, and process in which each citizen has an equal rights and opportunity to engage in and contribute to decision making. Without representation, public institutions that are socially representative of citizens cannot be developed. Political participation and representation
go beyond the act of voting in election. They also embody the freedom of citizens to express their opinions and to mobilize to influence policy. Together, they ensure that democracy and democratic institutions are a genuine reflection of the will of the citizens. Despite the fundamental importance to democracy, promoting and ensuring inclusive political participation and representation are still challenges for today. Unequal representation between men and women and other minorities still exists in India and also in the worldwide. Example, women who constitute over 50% of the world's population continue to be underrepresented as voters, political leaders, and elected officials. Democracy cannot truly deliver for all its citizens if half the population remains excluded from political arena. Democracy is not only about the right to vote, it is also about the right to elect. We each have a role to play in strengthening diverse representation in politics of our country. It's vital we have inclusive representative democratic institutions and in political parties. Our leaders need to acknowledge and own the uncomfortable truths about democratic deficit and lack of representation. If women, youths, and minorities are in, we will have diverse chambers reflecting the concerns of all the communities. We will have policy, we will have a greater sense of belonging, and we will have communities that can live and work with each other in collaborative and meaningful way that benefit us all. Experts say it is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Special acknowledgement to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for his initiative of Ek Bharat, Shrestha Bharat, who propounded that cultural diversity is a joy that ought to be celebrated through interactive and reciprocity between people of different states and union territories so that a common spirit of understanding resonates throughout the country. The most important thing for me is acceptance of our differences. As citizens of India, if we can accept and respect other tribes or communities, culture, beliefs, and background, then we would feel the tribes' beliefs and background, then we wouldn't feel alienated. Therefore, acceptance is the most important tool. Lastly, but not the least, dear friends, relationships are powerful. Our one-to-one connection with each other are the foundation of change and building relationship with people from different culture, gender, or custom is key in building diverse communities that are powerful enough to achieve significant goals. Taking this opportunity, taking advantage of this August gathering, today I salute and congratulate Madam Rekha Sharma, Honorable
Chairperson, National Commission for Women, and all the staff of NCW for your tireless endeavor by conducting seminars, workshops, capacity building, conferences for the Northeast 8 states on the topic, empowering women through participation in electoral politics and in decision making. The seeds that you have sown, we are reaping today. First, for the first time in the history of Manipur, 5 women, 3 from BJP, have been elected in the recent concluded 12th Manipur Legislative Assembly. Manipur got its first women legislator, Hangmila Shaiza, my mother-in-law, in 1990. After 32 years, we have now 5 lady MLAs. Those who come from Manipur, shall we all stand up and give a big applause and give our gratitude to the National Commission for Women. Okay, thank you, thank you. Thank you very much, ma'am. Nagaland State too have recently nominated S. Phangnon Konyak, Nagaland State BJP Mahila Morcha President, as member of Rajya Sabha. This is the second Naga woman parliamentarian after a gap of 45 years. The first elected MP in the Lok Sabha in 1977 was my auntie Rano M. Shaiza. Now we have, if I'm not mistaken, we have around 6 lady MPs from the Northeast state and a minister, state minister also. All this credit goes to every one of you who has supported, and now I can say that we women have started facing these challenges and has come out to work for our states, and I'm very, very proud of that. Please support everyone of you for more women to come out, youths to come out and join in the decision making. We need your support and the support of all the people to be equal in politics also, in the electoral, especially in the electoral politics. Thank you. Thank you very much, ma'am. I think you bring in the acceptance of diversity also from the perspective of women representation, and I think that has been part and parcel of what India is marching ahead and having more women leadership in our country. Being the last speaker is not easy. It's tough because you will have to bring in inputs of all the speaker, and that too representing a media, and being the executive editor of the TV9 National Security and Strategic Affairs. I would like to introduce our next speaker, which is Aditya Raj Kaul. I think everybody spoke about media today. But today, media in India has fragmented, It's not just the media we know about where we take out our newspaper early morning, watch the news every day. Today, it's like in our hands, in our mobiles, the technology. And how do you, my question to you is, if we are talking about the role of media, and what are the ways media can address racial diversity in order to draw a positive response? I know every time there's a crime on a racial issue, the media is running towards it, right? But when there is a positive story, nobody is running towards that positive story. I think some of our speakers talk about storytelling, the aspect of how diversity can be more inclusive. My question to you is, what would be that, and how should it be? Thank you. Thank you so much to the moderator. Certainly, being the last speaker is not easy, but I'll try to sum it up as soon as possible.
And thank you so much to the chairperson of the National Commission for Women, Rekha Sharma ji, to the Special Unit for the Northeast region from the Delhi Police for organizing such an important topic. And I'll speak in both in English and Hindi because there are people from different areas here. पहले तो जब मैंने सोचा कि मुझे क्यों बुलाया गया इस पैनल पे, तो मैंने देखा कि there is a vast experienced group here, and in fact I heard them and I almost became emotional. It was difficult to fight tears at times. बहुत लोग हंस रहे थे, लेकिन it was a very difficult topic. और समझता वही है जिस पर बीतती है. तो जो ये आप बीती इन्होंने बताई, I am also from Kashmir. I am a Kashmiri Pandit, and for the last 32 years, I've been in exile in Delhi. I might be representing the media here, but that's another side of me. So, the question here is that why has there been such discrimination? Why has there been such abuse in Delhi? जैसे कि बहुत सारे पैनलिस्ट ने यहाँ पर बोला कि चिंकी लोगों को बुलाते हैं, और हम सबको पता है ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2 साल पहले शुरू हुआ है, कई सालों से ये हो रहा है. So why has this happened, in Delhi University, in different colleges, etc.? So there are 3 major areas that I look into. Of course, the government, the media, and the society. कि उनको अपना रोल क्या अदा करना है. हाँ, मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मीडिया की बहुत बड़ी गलती भी है कि जैसे कि बाकी लोगों ने बोला कि नेगेटिव स्टोरीज को ज्यादा चलाते हैं, पॉजिटिविटी को नहीं करते, अवेयरनेस ज्यादा नहीं फैलाते. लेकिन मैं एक छोटी छोटी कहानियां आपको सुनाऊंगा अपनी जिंदगी से, और उसके बाद सम अप करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे सुनते सुनते. Many years back, I was in school, 17, 18 years back I'm talking about. I was playing soccer on my football field. And suddenly a young gentleman came running with my coach and just took away our football and, from the middle of the field, just threw the ball and it actually went into the goal. And we were like, who's this person? He looked like a person from Northeast and we didn't know him. And suddenly हमारे कोच आए और बोला कि आप नहीं पहचानते, ये कौन है? तो we said, no, मैं तो बिल्कुल नहीं पहचानता. तो बोला ये बाइचिंग बूटिया है. आप क्या बात कर रहे हैं यार, आप बाइचिंग बूटिया को नहीं जानते? So I was thrilled, and the entire soccer team and everybody just rushed to Baichung Bhutia and shook hand with him. So what an honor it is for me to be here with Baichung Bhutia, India's football soccer star. हमारे पास एक पूरा ही हम मनगढ़ंत तरीके से क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन बाइचिंग बूटिया ने हिंदुस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट किया है. What an honor it is for all of us to be with Baichung Bhutia today. Now comes to second story, और मैं दोनों पक्ष रखूंगा, मीडिया का पक्ष भी रखूंगा और मीडिया के खिलाफ भी. और मैं जाना चाहता हूं कि मैं 2 टूक बात करता हूं सामने. मैं बहुत बारी मेरे जो एडिटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई आप थोड़ा सा आराम से बात कीजिए. तो द थिंग इज अबाउट व्हेन डिड दिस चेंज कम. 7 साल पहले हम कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद अवेयरनेस हुई, नॉर्थ ईस्ट को बहुत बारी मिनिस्ट्री भी मिली. आज कितना गर्व की बात है, जो कानून मंत्री हैं हिंदुस्तान के वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, जो विदेश मंत्री हैं वो नॉर्थ ईस्ट से हैं. कितना ऑनर की बात है. लेकिन 2014 में there was an incident that happened and many of you would be aware about it. कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, and that is about Neeru Tanyam, a 20-year-old who was brutally killed in Lajpat Nagar area of South Delhi. और मुझे पता है शायद ये फ्राइडे या सैटरडे की घटना थी, मे बी आई एम रॉन्ग, और किसी ने मीडिया में ये स्टोरी नहीं की थी. अखबार में शायद 1-2 जगह पर आया था, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी, आई एम सॉरी टू से, there wasn't much action. Of course, case was registered and the usual things were done, but 2 दिन तक खास कुछ वहां पर हुआ नहीं. और उसके बाद मेरे जो दोस्त और मेरा जो इंट्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट के साथ इतने अच्छे से हुआ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से पढ़ा, और मेरे कॉलेज में आसाम से भी, मेघालय से भी, बिहार से भी, गुजरात से भी, केरला से भी, ऑलमोस्ट हर स्टेट से वहां पर बच्चे थे. और मेरा जो एक कॉलेज का दोस्त था 2014 में, उसने मुझे 2014 में मैं टाइम्स नाउ में काम करता था, मुझे उन्होंने एक मैसेज भेजा और वीडियोस भेजे कि ये एक लड़का है नीरू तान्याम और ये ऐसे हुआ है, और किसी ने कुछ नहीं किया, सरकार ने या पुलिस ने या मीडिया ने. और उस वक्त मेरे कलीग और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी होते थे,
So I sent it to Arnab and I said, this is from the Northeast and you are from the Northeast as well. Why shouldn't we pick up this story? And this is horrible that this is happening in the national capital, in an India of today, at that time in 2014. और उस वक्त हमने decision लिया. And today people might have 1,000 opinions about Arnab, that's all right. But at that time he took a call and all the editors and all the reporters, 21 of us, were sent on the field to Lajpat Nagar and told कि इस पर आप report कीजिए. We forced the government at that time that you need to set up a commission, that you need to actually come up with a resolution of this problem. Now, I also appreciate the unit that finally made it happen. Of course, it's a huge battle. आगे हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है मानसिकता की, mindset की. It will take a lot of time. But the efforts that they have taken, अब ये किसी हमने नहीं किया, मैं अपना क्रेडिट नहीं ले रहा. आप सोचिए, दिल्ली पुलिस को भी या सरकार को भी और गृह मंत्रालय को भी नॉर्थ ईस्ट के ही लोगों को लाना पड़ा ये जागरूकता करने के लिए और ये माइंडसेट चेंज करने के लिए. तो ये हमारे लिए क्या कहता है? एज अ सोसाइटी, व्हाट डज दिस मीन फॉर अस? सो हमको अपने मन को अंदर से टटोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. लद्दाख के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं. आप लद्दाख का इनसे पूछिए, ये मतलब सोनम जी कितने इंस्पायरिंग फिगर है, सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए. द काइंड ऑफ सोशल मीडिया फॉलोइंग दैट ही हैज, एंड सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोइंग किसी एवी चीज के लिए नहीं हो रही है. इन्होंने इनोवेट किया है, इन्होंने करके दिखाया है. जो सरकार नहीं कर पाई, जो मीडिया नहीं कर पाई, वो इन्होंने अकेले किया. सो these are inspiring stories that we need to follow. तो लद्दाख ने कितना डिस्क्रिमिनेशन झेला है ये तो मैं एज अ कश्मीरी आपको बता सकता हूँ कि जो कश्मीर की हेजमनी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वहां पर रही. और मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख सिर्फ श्रीनगर नहीं है, सिर्फ पहलगाम गुलमर्ग नहीं है. जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 अलग अलग रीजन हैं, इनकी अलग अलग मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं. उनको जानने की जरूरत है. क्या आप दहानू के बारे में जानते हैं? क्या आप करगिल के अंदर के गांवों के बारे में जानते हैं? क्या आप चुशूल के बारे में जानते हैं? हाँ, कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि इंडिया चाइना का जो 2 साल से चल रहा है तो वहां पर थोड़ा बहुत अवेयरनेस आई है. वहां पर 4G इंटरनेट नहीं था. कैन यू बिलीव दैट? अभी कुछ महीने पहले वहां पर 4G का टावर लगाया गया है. मुझे नहीं पता इफ इट्स एक्टिव स्टिल और नॉट. व्हाई हैजंट दिस हैपेंड? व्हाई डिड वी इन इंडिया टेक सो मच ऑफ टाइम टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जब चाइना वहां पर तैयार बैठा हुआ था, और हमको इतना वक्त क्यों लगा? वो अभी ही क्यों हो रहा है? अभी ही 3-4 सालों में क्यों हमने इतनी प्रगति की वहां पर? अभी भी बहुत आगे जाने की जरूरत है. सो माय होल सबमिशन टू यू इज दैट वी इन द मीडिया नीड टू बी शोन अ मिरर. यू ऑल हैव शोन अस अ मिरर. आई एज एन इंडिविजुअल कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ. मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा. मैं जागरूकता लाने की कोशिश करूंगा. मैं कोशिश करूंगा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन और ये जो रेशियल स्लर्स होते हैं ये ना हो. जैसे कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भी बोला कि मानसिकता में बदलाव आया है, शुरुआत हुई है, नींव रखी गई है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक चेंजेस ओवरऑल. आखिर में मैं अपनी कहानी हल्का सा बताऊंगा कि 370 जो जम्मू कश्मीर से हटा वो भी इसी तरीके का एक डिस्क्रिमिनेशन था. आप आज हम सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं रेशियल उसमें, लेकिन एथनिक डिस्क्रिमिनेशन भी कितना ज्यादा होता है और महिलाओं के साथ कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, दलितों के साथ कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है. ये 370 ने हमको बताया और लोगों को नहीं पता था. इवन टुडे, आई एम सॉरी बट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट नो. व्हेन द जज हर्ड दैट ही वाज शॉक्ड कि इन एन इंडिया ऑफ 2019 द वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर नॉट अलाउड प्रॉपर्टी राइट्स. अगर आप बाहर कहीं शादी करते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि आप को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. ये 370 हटाने के बाद प्रॉपर्टी राइट आपको पूरी तरीके से मिला है. आप अगर वाल्मीकि हैं या दलित हैं, जम्मू में रहते हैं, जो पंजाब से या बाकी जगहों से जम्मू कश्मीर में आए, कैन यू बिलीव, मेरा रूह कांप उठती है ये सुनने से कि जो वाल्मीकि और दलित समाज के लोग जम्मू कश्मीर आए कई सालों पहले, उनको राइट नहीं था कि जम्मू कश्मीर की सरकार में या कहीं किसी डिपार्टमेंट में वो नौकरी कर सकें. वो सिर्फ सैनिटाइजेशन वर्कर, सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे. उनके बच्चे सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे. तो ये 370 ने हमको दिया. तो हमको जागरूकता लाने की भी जरूरत है, हमको आपस में बातचीत करने की भी जरूरत है, और हमको ये देखने की जरूरत है कि कहाँ हमसे ये चूक हुई है. और आखिर में मैं जितना भी बोलूं कम रहेगा, हमारे पास समय की भी कमी है, लेकिन
I was very moved by the entire panel today. And as I said, only a victim can understand. I'm sure you all are empathizing right now, but only a victim can understand. So I think लामो जी ने जो बोला उससे मैं बहुत भावुक हुआ. I think हम सबको चिंतित होना चाहिए कि लद्दाख से कोई हो, नॉर्थ ईस्ट से कोई हो, कश्मीर से कोई हो, साउथ इंडिया से कोई हो, कहीं से भी, उसको क्यों आज प्रूव करना पड़ रहा है कि वो हिंदुस्तानी है? उसको क्यों ऐसी मजबूरी में हमने डाला है? और मैं भी अपने आप को दिल्ली वाला ही अब कहता हूं, 32 साल से तो हम दिल्ली में ही हैं निर्वासन में. सो मैं आप सबको तो मजबूर नहीं कर सकता, बट एज एन इंडियन, एज समवन हु रिजाइड्स इन दिल्ली, आई वुड लाइक टू राइज अप and apologize and fold my hands and apologize to Rinchen Lamo. I'm very sorry. अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर में नीचे करके सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की जाती है. अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर है. हमारे में हाथ जोड़कर अगर हम माफी मांगे, वो एक शुरुआत हो सकती है, वो एक पहल हो सकती है, ये मानने की हमसे गलती हुई है. We have discriminated. We have done something wrong. और आज हम ये पहल करते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे. आप उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने हम हैं. आपके साथ आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आप में उतनी कैपेबिलिटीज मुझसे भी ज्यादा होंगी, लेकिन हमने कहीं पर गलती की है. तो इसलिए मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूं और एनसीडब्ल्यू को शुक्रिया करता हूं फिर से कि इतना अच्छा टॉपिक इतने इंस्पायरिंग फिगर्स के साथ आज किया, अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ. And thank you so much, so kind of you. Thank you, Mr. Aditya Rajkol. You have made my work as a moderator so easy for concluding and observing every aspect of the panelists today. And I think we all stand by his last message, that if we have to apologize, we move forward. I think that's one very strong message of this meeting today, and carries forward all those contributions that each of the speakers have given here, their inputs that of course the the rapporteurs are putting all these, and it'll come in as a plan of action. Thank you all speakers, from Mr. Tadinder Singh Luthara, Mr. Aditya Rajkol, Madam Rinchen Lamo, Mr. Hibu Tamang, Pooja Ebam, and Mr. Baichung Bhutia, Madam Sasso Sasia, Ajajui, and Sonam Vanchuk. Thank you very much for each of your contribution. I think we just made it well that the panel just end 5 minutes before 1:30, and I think everybody is gearing up to go and have lunch. Thank you, everybody. Thank you, Madam Rekha, for taking this National Commission for Women, bit into a panel of discussion. Thank you, everyone. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का. कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं. तो हमें लड़ना है इस मानसिकता के साथ. और मैं निवेदन करूंगी माननीय चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रेखा शर्मा जी से कि वो मंच पर आए और तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनका अभिनंदन माननीय के जरिए. एक बार जोरदार ताली इस शानदार आयोजन के लिए. और सबसे पहले शुरुआत हसीना खारभी जी के साथ, जो कि फाउंडर इंपल्स एनजीओ नेटवर्क. शानदार संचालन, बहुत गंभीरता के साथ इस मुद्दे को रखा हसीना जी ने. आपका बहुत बहुत आभार. माननीय चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रेखा शर्मा जी के द्वारा अभिनंदन हसीना खारभी जी का. और अब सोनम वांगचुक, इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट फ्रॉम लद्दाख. बहुत आभार आपका अपने विचार रखने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए. मिसेस सोसो साइजा, एक्स मेंबर एनसीडब्ल्यू, एक लंबा अनुभव, कर्मशील, लगातार महिलाओं के लिए काम करती हैं. आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए. श्री तेजिंदर सिंह लूथरा जी, डायरेक्टर नेशनल पुलिस मिशन, रिसोर्स पर्सन नॉमिनेटेड बाय BPRND. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. आपके अनुभव को हमने सुना और समझा, बहुत कुछ सीखा. श्री हिबू तमांग जी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल पुलिस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्पूनर. आपके विचार, आपके अनुभव से बहुत लाभ मिलेगा, शुक्रिया आपका. मिस रिंचन लामो जी, मेंबर फ्रॉम लद्दाख, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. आप यहां पर आई, आपके अनुभव हमने जाने, समझे और बहुत कुछ सीखने को हमको मिला. बहुत बहुत आभार आपका. मिस पूजा एलेनमन, IS SDO लैम्पलेट इम्फाल, आपका बहुत शुक्रिया.
छोटी उम्र लेकिन बड़ा अनुभव, आपके विचारों को सुनने का मौका मिला और निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। मिस अजाइलियू न्यूमाई, आपकी भी गरिमामय उपस्थिति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए। प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एंड हेड सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय। मिस्टर आदित्य राज कौल, एग्जीक्यूटिव एडिटर, TV9 नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, आपका शुक्रिया। मीडिया का लंबा अनुभव जो आपने साझा किया, साथ ही जिस तरह से आपने संकल्प लिया, वो निश्चित ही हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। हम सभी के संकल्प को सिद्धि और शक्ति मिले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से ये शानदार आयोजन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और माननीय चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माननीय रेखा शर्मा जी का, और हम सब के चहेते हमारे रोल मॉडल बाइचुंग भूटिया जी हमारे बीच, जिन्हें हमने सुना फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और स्मृतियों को संजोता हुआ एक चित्र हमारे तमाम पैनलिस्ट के साथ। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के समापन के लिए, इस शानदार पैनल डिस्कशन के लिए, इस शानदार विषय के लिए। हम सभी के संकल्प को सिद्धि और शक्ति मिले, इसी मनोकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।